All right, so let's continue the session here we have left. So today, since majority of them are first time in engineering, that to first year, we still will discuss about the introductory things, which is not very specific about any controller. That we will do it from next week. So this week, what we will be doing is, today I will complete some more components of single board computer, little bit of technical details. Then if I can get some count by today itself that how many of you are going for the do-it-yourself concept of having your own board and components, at least if I have a rough idea, at least some 15-20 students, if they're willing to come tomorrow, then we have a laboratory session where you will be, means we will do it batch by batch, so that no, at a time cannot do for everybody. So those who are can come tomorrow also and willing to have your own hardware. So I suggest go for the board which is having all the capabilities, like uh, like we have designed. I was telling this system, which is you can have whatever I have mentioned in my that brochure, which consists of, if you remember, this is a CPU which is having ability to write a program in micro Python also, as well as in this embedded C, but however using Arduino as a compiler, not the Arduino as a board. Board is our design. So when we are using this board, what we have done is couple of sensors, whatever is mentioned in that brochure, those sensors are there on the board, and then some components which are related to motor drivers, right? And then some like LEDs, buzzers, all those things. But then we won't, and LCD, those things we will provide you, some cables and connectors. But when we are doing this, we won't be populating everything in one shot. That's why this is a time consuming task. If you come here, then first you need to understand the design. Then I will give you some software where you have to visualize how this board looks like, right? What is the significance of each and every component and their corresponding values. Then mounting one component at a time. But that's again a skilled job of mounting. But then after mounting, how do you know whether it is working or not? So then how will you test it working? So it's a little bit of patience is required. Step by step you have to do it. And it is skilled work. Skilled work is because what is the the equipment which you are using. सर एक प्रोक्योरमेंट का डिलीवरी आने वाला है कंप्यूटर्स का 36 मशीन्स का, उसका इंस्टॉलेशन ये रूम में होगा. What time? अराउंड 4 हो जाएगा. Right, so every component has some purpose. Components have some direction. Some of them have polarity. Some of them are sensitive, and so on. So we need to understand, since first time we are doing. So step by step we have to understand, not in a hurried manner. So that's the choice. So if you make your own choice by today, let me know how many of you are physically coming here. So those who are not physically coming, I will demonstrate it online. But then at remotely also you should do it. No, just only seeing. मतलब खाना आप smell कर रहा है या
खाली देख रहा है. वो इट्स योर चॉइस, बट लेट्स सी, बिकॉज जब तक आप माउंट नहीं करोगे, सोल्डर नहीं करोगे, पता नहीं चलेगा. इट्स लाइक दैट. So it's your choice, but then I'm giving you multiple options for this. One is, like I said, uh, though we have various platforms to begin with, we will start with all of us same board. In future, if at all, if you want to change the CPU, I will exchange the CPU if you are interested, so that you can also have the practice on other systems also. But at least one board you should do it on your own. That's my appeal to you. And the cost I already said, 5,000 with all the components, PCB, everything. But I won't give you all of them tomorrow itself. I will give one at a time. पहले करो, फिर करो, फिर करो, because these are all discrete components. फिर आप कोई खो जाओगे, फिर वापस आओगे सर. तो इसलिए जब आप करोगे, that time I will give you, भाई ये ले लो अभी, you mount it. There are certain things I will day one itself I will give you. जैसा जो टायर्स है या ऐसा कुछ जो खोता नहीं है ना, वो डब्बे में आपको दे देता हूँ. बट कुछ कंपोनेंट है बहुत ही बारीक सा है, यू कैन नॉट मैग्नीफाइंग ग्लास में देखना पड़ा, वो आपको वन एट ए टाइम आई विल गिव यू. देन आपको वो माउंट करना. दैट इज वन ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन इज जिनको कुरियर करना है, देन वी विल सी आप जो भी दोस्त हु आर रिमोटली अवेलेबल, उनका लोकेशन क्या है. सो वी हैव सम वॉलंटियर्स, विल कीप इन टच विथ यू. गिव मी योर एड्रेस, देन विल फाइंड आउट व्हाट आर द कुरियर चार्जेस. पोस्ट ऑफिस से कर सकता है या DHL या किससे कर सकता है, तो चार्जेस like extra you have to pay. If you want with GST company this thing, then 18% extra for that. The cost of 5,000 plus 18% is the cost. And what else? Yeah, if you want everything soldered, right? Oh, sorry, I'm sorry. If you are doing on your own, it is 4,500, right? Not 5,000. If you want everything soldered, tested, then it is 5,000. Service charges. Okay. All right. All right. So the doubts are clear. So we'll form batch by batch. Who comes first, ready to do it? पहले उन लोग को ले लेते हैं, जो बाद में आएंगे उनको करेंगे. That's why I made 4 or 5 batches. So don't worry. I mean, धीरे-धीरे everybody will come in line. So those who understand the importance, so then people will join. So there is no here business model or anything. As you know, we are not charging anything for training or whatever. 1 year, we'll find out. Even if you have some individual problems, we'll try to solve the problems. Or even if I do not have expertise, we will pitch the people who are working in industry, or those who are participate in the competitions. We'll talk to them. They will give the presentation, like somebody was asking how to solve some algorithms and all. So those who have participated, I will ask them like shortest path first and all those computer science problem that we will see first. But you post me your problem statement, then I will keep the solution ready. Next time somebody will explain you how to solve those problem statements. Okay, so those who are attending online, you can keep the questions with you. End of the presentation, I will take up the questions. Okay, so like I was saying that this is not new. This is same as your computer. All, if you see the blocks in this diagram also, whatever computer is having, even our system also having the same thing, right? These basic blocks. Every computer has some inputs, some outputs, and some computational units, right? So only difference is in computer, your inputs are known. For years, we know our inputs are keyboard is the input, mouse is the input, and like joystick and all, they are the inputs. And outputs are like you have a display, you have a speaker, right? Those are your output devices. And printer is output device, like that. So it is a choice. These things are there. And even the microprocessor, that's the heart of the system, the brain of your computer, is having internally
majorly arithmetic and logic unit, and it is having control unit and a set of registers. So any microprocessor has these three components. Only thing is that when it comes to computer, the name is called microprocessor, but yeah, other than computer, because our topic is other than computer, single board computer. When it comes to other than computer, then it is not called microprocessor, like in mobile phone also. In mobile phone also, the CPU which is used is not called microprocessor. They are called microcontrollers. Okay, so microprocessors are used only in computers, nowhere else. Okay, microprocessors are only in computers. And who is manufacturing microprocessors? Only Intel is manufacturing and AMD is manufacturing, nobody else. But as I said, other than those popular microprocessors, 30 plus companies, I will show you, 30 plus companies are manufacturing microcontrollers. And each company is having more than 500 to 1000 microcontrollers. Okay, so what is the difference between microprocessor and microcontroller? Microprocessor means whatever you see outside this box, right, is external. Means in your computer, microprocessor is one IC, one component, but input is a separate, different component, output is a different component, memory is a different component. That is microprocessor. However, in our case, right, for example, I told you some CPU we are using. This is microcontroller. In this microcontroller, memory, input, output, you name any component, right? Timers, interrupts, A to D converters, D to A converters, you name any peripheral, everything is within the chip. Nothing external, no additional chips. Entire system works, means that's why it is called single board computer, means single chip solution, right? No external memory. However, in computer, you can add the memory, you can remove the memory, right? You can add your multimedia card, you can remove the multimedia card, right? Or nowadays, people put GPUs, NVIDIA cards, and so on. Or modem, for example, if you want to connect some modem, so you can put a card in your computer. So like that, only CPU is microprocessor, but all other things is your choice. If you doesn't like multimedia card, multimedia provided by Intel, then you can add your own multimedia thing. Sound, if you doesn't like, you can add. Everything is a choice in computers, like that. But here, everything is a single chip. For example, you have a calculator. Calculator pay, right? There will be one chip. You cannot change the memory, you cannot change nothing. Mobile phone, whatever is given, we don't open and upgrade or something. Use it and throw it. Okay. Otherwise, in computer, as and when you want, you can upgrade your computer, right? Some of the components are no, the CPU. The CPU also, you can still use that CPU on other boards because they're useful. Like that. Memory. आप इसका मेमोरी लेके दूसरा इस पे डाल सकते हो, इसका हार्ड डिस्क लेके उस पे डाल सकते हो, और you can still use old parts and new systems. That flexibility is there because it is, that's why including operating system is upgradable. इसलिए आपको हर साल पूछते हैं upgrade करना है, feature change करना है, memory बढ़ाना है, whatever. That's how it is designed. But in our case, right, other than microprocessor, generally we don't do any of these things. For example, आपने एक बार washing machine खरीदा, I don't think anybody will open the washing machine, upgrade the memory. Yeah, which ऐसा कुछ होता नहीं है, no. Use it and throw it. पसंद नहीं आया, नया ले लो washing machine. Like that. अभी for example आपका मोबाइल फोन है, when you buy it, it has some features. बाद में आपको लगता है यार मुझे थोड़ा और फीचर्स है, कुछ नहीं कर सकते, फेंक दो, नया ले लो. Nothing you can do. स्क्रीन बदल नहीं सकते कि नया टच स्क्रीन डालो, ऐसा कुछ नहीं. Only repair होता है, but there's nothing upgradable. Okay, so that's the reason why microprocessor manufacturers are very few models. However, microcontrollers are, why hundreds and thousands of microcontrollers are there? Because it is application specific. जैसा मुझे इस स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए आई विल गेट ए माइक्रो कंट्रोलर, इस पे मुझे कैलकुलेटर बना है, उसके लिए अलग कंट्रोलर मिलेगा, ठीक है, मोबाइल के लिए अलग कंट्रोलर मिलेगा, वॉशिंग मशीन के लिए अलग कंट्रोलर मिलेगा.
like that. You name a application, you will get a microcontroller for that. और आपको एक नया एप्लीकेशन है, आप आपके पास, इफ यू हैव मनी, कंपनीज आर रेडी टू मेक ए माइक्रो कंट्रोल फॉर योर एप्लीकेशन. जैसे मैं आपको टॉयज का एग्जांपल बता रहा था, सायरन, अलार्म्स, बजर्स, म्यूजिक वगैरह, वो आपको आपको चलो आपका खुद का गाना ऐसे में डाल के चाहिए, लोग बना के देते हैं आपको, दे आर रेडी टू डू दैट. बट ओनली थिंग इज, वो हम कब करते हैं, अपना माइक्रो कंट्रोल कब बनाते हैं, जब आपके पास ज्यादा डिमांड है, मतलब ज्यादा कस्टमर्स है. अब फ्यू माइक्रो कंट्रोल्स आप बनाने के लिए जाओगे, फिर इट विल कॉस्ट यू लैक्स ऑफ रुपीज, फ्यू लैक्स ऑफ रुपीज. अगर वही चीज आप एक 10,000 माइक्रो कंट्रोलर चाहिए, वही आपको 100 रुपया में आ जाएगा. आजकल वो म्यूजिकल गाने का चिप कितने में आता है, 10 रुपया में आता है. एक आईपॉड आपको 10,000 पे आता है, वही छोटा सा वो है, आपको 10-15 रुपया में आता है. So everything is on quantity basis. So we go for this designing our own CPU when you have a big quantity. Okay, so everything, like that's what I was saying, everything on chip. Everything means, as you can see, आजकल वो भी आता है आपको DSP, RAM, ROM, FPGA, everything comes on one. इसको there is another name called SoC, single system on chip. System on chip. That means आपको, like for example, system on chip के लिए best example कौन सा है आपका, वो Raspberry Pi boards. Raspberry Pi boards में कैसा है, एक ही IC रहेगा, उसमें आपको मल्टीमीडिया भी है, USB है, वाईफाई है, राइट, एंड पेरिफेरल्स भी है, मेमोरी भी है, सब कुछ. CPU, आर्म प्रोसेसर, खुद CPU है. एवरीथिंग मीन्स, वो लोग ने क्या सोचा था कि यार मेरा स्कूल्स में छोटा गेम्स वगैरह, हॉबीज ऐसा करना है, तो मुझे एक ऐसा CPU चाहिए जिसमें सब कुछ है. तो दैट्स व्हाई दैट दे हैव डिजाइन्ड दैट रास्पबेरी पाई बोर्ड, ताकि आपको सेपरेटली हार्ड डिस्क या मल्टीमीडिया कार्ड, CPU खरीदो, वो सब नहीं चाहिए. वो एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, उसके लिए वो रास्पबेरी पाई बोर्ड का वो उनका जो भी है CPU, not recollecting, so they are designed for that. तो अभी वो पॉपुलर हो गया, इसलिए नव आजकल वो काफी सारे इवन कॉलेजेस में भी लोग यूज करना शुरू किए. दैट्स द रीजन. सो लाइक दैट जनरली अदर देन कंप्यूटर पे वट एवर यू डिमांड, इट विल बी देयर ऑन चिप. ना अभी ये आपका चॉइस है. अभी चॉइस मतलब कैसा है, आपको ये जो आपको अंदर जो ब्लॉक्स दिख रहा है, आपको कितना चाहिए, आपको मेमोरी कितना चाहिए, रैम कितना चाहिए, रोम कितना चाहिए, पेरिफेरल्स कितना चाहिए, ठीक है, चॉइस है ना. आप जब आप मोबाइल या कंप्यूटर खरीदते हो, आप देखते हो ना, 8 GB चाहिए, 16 GB चाहिए, राइट, रैम कितना चाहिए, रोम कितना चाहिए, इसे सब कुछ पूछना पड़ता है ना. ओनली i3 देख के खरीदते हो क्या आप? नहीं ना. यू ऑल्सो वरीड अबाउट मल्टीमीडिया थिंग्स, ग्राफिक्स कार्ड, कंट्रोलर कार्ड, उसका रेजोल्यूशन कितना है, राइट, साउंड क्वालिटी कैसा है, एंड सो ऑन. ओके, नॉट जस्ट ओनली CPU, देयर आर अदर थिंग्स आल्सो देयर. आर यू गेटिंग why there is a choice within the IC also? Why there is a choice? Why so many microcontrollers, system on chips things are there? Because every application demands something else. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल आपका बिल्डिंग्स है, राइट, एक बिल्डिंग और दूसरा बिल्डिंग में, एक फ्लैट और दूसरा फ्लैट में, सब अपना अपना हिसाब से ही बनाते हैं, सब एक जैसा तो नहीं दिखते. एरिया तो सबका एक ही है. अब एक ही बिल्डिंग में, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल 550 स्क्वायर फीट फ्लैट, सब लोग उसको इतना मॉडिफाई करते हैं कि किसी को नो 2 बेडरूम्स मिक्स कर देते हैं, नहीं तो किचन को हॉल में मिक्स करते हैं, टॉयलेट को किधर मिक्स करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, इतना कॉम्बिनेशंस करते हैं कि नोबडी वांट्स. मतलब बिल्डिंग सेम है, बिल्डर ने सेम दिया, बट ये लोग अपना उसको तोड़ के, कभी कभी बिल्डिंग भी गिर जाता है, इतना मॉडिफाई. वो बीच में नो कोई कॉलम भी निकाल देता है उसको, इसलिए वो बोरीवली में गिर गया था वो लक्ष्मी वो बिल्डिंग का. मतलब उनको लगा यार ये बीच में आ रहा है कॉलम वो कॉलम को निकाला तो बिल्डिंग ही गिर गई. तो इतना दिमाग लगाते हैं लोग. सो
I am saying it is a choice. Finally, when I am choosing a CPU, मेरा CPU कितना powerful है. Do you understand? What do you mean by powerfulness of a CPU? Powerfulness of a CPU means आपका जो instructions जो है, हमेशा हम लोग CPU को how will you find out the performance? Instructions per second means per second how many instructions are executed, right? That is called MIPS, millions of instructions per second. How much time it is taking to execute your program? तो उसका यूनिट है वो. तो that's why you have to see कि मेरा CPU how many instructions are executing per second. Okay, तो आपको बहुत ही पावरफुल चाहिए तो क्या हो जाएगा, आपका 550 स्क्वायर फीट एरिया में आपका बेडरूम बड़ा हो गया फिर, ठीक है, फिर इसका मतलब है हॉल छोटा हो जाएगा या किचन छोटा हो जाएगा, कुछ तो एरिया तो उतना ही है ना. तो सिमिलरली यहाँ में जो सिलिकॉन वेफर का साइज जो है वो उतना ही है, लेकिन आपने सीपीयू को बड़ा कर दिया, हो सकता है कि फिर आपका मेमोरी कम हो जाएगा, पेरिफेरल्स कम हो जाएंगे. समवेयर यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑलवेज. सब कुछ नहीं मिलेगा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड को डिजाइन. सब कुछ नहीं मिलेगा, कुछ आप पाना है तो बोलते ना, कुछ आपको खोना है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना है. मतलब आज आप इधर मेरे सामने बैठा है, when you are attending something, मतलब आप कुछ खो रहा है ना, कुछ वो बाकी लोग कुछ सो रहे हैं, कोई समथिंग ऐसा जो आप यू हैव डिसाइडेड कि हमें वो नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, सम इट्स योर चॉइस. सो लाइक दैट डोंट एक्सपेक्ट कि मुझे पावर बहुत ही कम पावर में पावर कंजम्पशन बहुत ही कम पावर कंज्यूम करना है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे बहुत ही पावरफुल कंप्यूटेशन यूनिट चाहिए. एग्जैक्टली ऑपोजिट इन नेचर. जितना आप ज्यादा कंप्यूट कर रहे हो उतना वो पावर भी खींच लेता है. पावर कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस. ओके, सो इट्स अगेंस्ट द लॉ. इसलिए हम बोलते हैं ना कि एनर्जी इज नॉट, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द एनर्जी. एनर्जी इज ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म. तो इसलिए अगर आप ज्यादा इंटीग्रेट कर रहे हो हर चीज चिप में अंदर, फिर चिप का स्पेस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा. अगर एरिया बढ़ गया तो स्पीड कम हो जाएगा एंड सो ऑन, राइट. बट हमको एरिया नहीं बढ़ाना है क्योंकि आपका परफॉर्मेंस बढ़ाना है. परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो फिर आपको ज्यादा इंटीग्रेट करना पड़ेगा. ज्यादा इंटीग्रेट किया तो फिर प्रॉब्लम क्या होता है, जो पहले ज्यादा कंपोनेंट का साइज जो है और छोटा होते जा रहा है, और छोटा होते जा रहा है. यू हैव टू डिक्रीज द साइज ऑफ एवरी कंपोनेंट. फिर डिक्रीज कर दिया आपने, फिर उसका रिलायबिलिटी कम हो जाएगा. समझ रहे कि नहीं? तो मतलब अगर समझो आप कार में, आल्टो में और उसका ही कुछ टाटा का, दोनों में फर्क क्या है? ही हैज वो जो मटेरियल हर चीज वो इतना लाइट वेट यूज करता है, एक बार भी आपने ठोका बस खत्म. पर वही इफ यू सी सम अदर जर्मन कार्स या रशियन कार्स, वो कितना भी एक्सीडेंट होने तो उसको कुछ नहीं होता. बट लेकिन कॉम्प्रोमाइज कहाँ होता है? जापानीज कार्स में वो लोग इतना लाइट वेट मटेरियल यूज करने से क्या होता है कि गाड़ी का वजन कम किया तो क्या होता है, आपका इफिशियंसी बढ़ता है. मतलब जो कार रशियन कार, जर्मन कार 10 किलोमीटर देते हैं, उसका 18 किलोमीटर देगा. अदर वे राउंड, ये एक बार ठोका तो गया, आप भी जा सकते हो उस पर, लेकिन वो इधर वो एडवांटेज है. सो लाइक हम लोग का स्कूटर था, बजाज स्कूटर, एक जमाने में हम लोग, इवन फ्रॉम माय चाइल्डहुड आई हैव यूज्ड द स्कूटर. अभी भी हमारे घर पे पड़ा. मतलब आई एम 55 इयर्स ओल्ड, आई हैव अ स्कूटर व्हिच इज 55 इयर्स ओल्ड. अभी भी मैं उसको चालू करके लेके जा सकता. इट्स लाइक दैट. कितना भी गिरने दो, नथिंग हैपेंस. दैट्स हाउ दे वर those days, but it's like that. So what we are compromising and all is a in terms of somewhere. आपको अभी मोबाइल क्या चाहिए? आपको मोबाइल अभी when you are choosing a mobile, when you are choosing a microcontroller for a mobile phone, what is that you want in your mobile phone is the best performance mobile, जो ज्यादा फीचर्स चाहिए, बहुत ही लेस पावर कंजम्पशन होना चाहिए उसका. That's what you want. But I am asking you, फिर इसमें कॉम्प्रोमाइज हमने क्या किया? वो आपने कॉम्प्रोमाइज किया, वो किस में कॉम्प्रोमाइज किया?
रिलायबिलिटी में आपने कॉम्प्रोमाइज किया. सो जो रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव जो सीपीयू बनना चाहिए वो सीपीयू बनते नहीं है मोबाइल फोन पे. तो फिर उसका मतलब क्या है, यू वांट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीपीयू, हाई परफॉर्मेंस सीपीयू, लेकिन आपको ज्यादा दिन चलने वाला सीपीयू नहीं चाहिए. क्यों नहीं चाहिए मोबाइल फोन में? क्योंकि वैसे भी आप 1 साल के बाद फेंकने वाले. तो इसीलिए यू डू नॉट वांट टू हैव ए मोबाइल फोन व्हिच विल वर्क फॉर 5 years और 10 years. यू आर ओके फॉर, क्योंकि वैसे भी आप वापस खरीदते हो ना. So then that's why even manufacturer is also not thinking to make a CPU which will work for years and years. But अगर वही चीज मैं कहता CPU मैं 4 व्हीलर के लिए बना रहा हूँ, कम से कम मेरा कार चलना चाहिए 20 साल 30 साल, इंडिया में तो 40 साल भी चलता है कार. तो उसके अंदर जो भी CPU सारे कंट्रोलर्स है, मुझे ईयर्स एंड ईयर्स चलने वाला चाहिए. ठीक है, अगर कोई राइट एनी व्हीकल्स व्हेन आई मैन्युफैक्चरिंग, I want such kind of a reliable CPUs. Understood? तो वहां परफॉर्मेंस सेकेंडरी है, मुझे रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट है. कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट व्हेन आई एम मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस इक्विपमेंट व्हेन आई एम मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट इज दैट वो इक्विपमेंट वे एट व्हाट कंडीशंस दे आर वर्किंग, राइट, एट डिफरेंट माइनस डिग्री से लेके प्लस डिग्रीज, हीट, मॉइस्चर, all sorts of weather conditions. Like no, it's a dumped, मतलब एक 10 story बिल्डिंग के ऊपर भी वो इक्विपमेंट गिर गया फिर भी it should work. That's what is a military people wants. ट्रेन फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन ट्रेन में आप एक आधा इन्वर्टर है, बैटरी, सम सीपीयू आपने इंस्टॉल किया उसको. हाउ ए ट्रेन वर्क्स, मतलब वो लोग एक बोगी दूसरा बोगी को हर रोज ठोकते हैं, ठोक व्हेन इट लॉक्स. मतलब इमेजिन फिर वो कौन सा कंडीशन में वो ट्रैवल करता है, पूरा बारिश, मड, ये वो, इतना विलेज जैसे, और कोई मेंटेनेंस भी नहीं होता है सर. ऐसा कार जैसा हर रोज हम लोग कपड़ा ऐसे धो के मस्त ऐसा नहीं रखते ना. वो ऐसे ही महीने में एक बार. इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स द ट्रेन इज वर्किंग. Every part, AC से लेके हर चीज वर्क कर. So do you understand what kind of controller is required there? Is altogether different. So that is why mobile में हमें expectations are different. वहाँ का expectations are different. So that's why I'm saying it is a choice. So choosing a controller के अंदर मुझे क्या चाहिए is a application specific. That's why I'm repeating again and again. Our subject itself is a एप्लीकेशन स्पेसिफिक सिस्टम डिजाइन. मेरा एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, उसका मेरा फीचर्स क्या है, उसके लिए मुझे कौन सा सीपीयू चुनना है. इट्स नॉट सेम, इट इज डिफरेंट. ओके, सो नाउ लेट्स सी अगेन कंपैरिजन बिटवीन कंप्यूटर एंड ए अदर देन कंप्यूटर. आई होप नाउ you understood what I am speaking, but at least let's look at the slide. In this slide, what are the blocks are there? What you can see is there is a hard disk. You can see there is a hard disk where operating system is there. As I already discussed in the morning also, पूरा दुनिया में ऐसा कोई भी कंप्यूटर नहीं है जिसमें हार्ड डिस्क नहीं. आजकल लास्ट 30 years से हर कंप्यूटर में हार्ड डिस्क रहते हैं और हार्ड डिस्क के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है. सो व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, सबसे पहले क्या होता है, देयर इज ए बूट प्रोसेस. व्हेनेवर यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, देयर इज ए बूट प्रोसेस वेयर, राइट, द firmware, the BIOS which is there in the computer loads the operating system first from the hard disk. ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद ही एप्लीकेशन प्रोग्राम रन होगा. ठीक है, बट द क्वेश्चन इज कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिफरेंट, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर डिफरेंट. अंडरस्टूड? कोई लिनक्स इंस्टॉल करता है, कोई विंडोज इंस्टॉल करता है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिफरेंट. फिर उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम इज डिफरेंट. कोई वीबी में काम कर रहा है, कोई जावा में काम कर रहा है, कोई टर्बो सी काम कर रहा है, कोई म्यूजिक खेल रहा है, कोई इंटरनेट ब्राउजर यूज कर रहा है. इज एप्लीकेशन, मेरा चॉइस है. सो हाउ यू वर्क, फर्स्ट थ्रू बूट प्रोसेस you load the operating system,
then you load the application program and you run it. What is another important point here? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ है? हार्ड डिस्क पे है, लेकिन हार्ड डिस्क से कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है आपका. फॉर एग्जांपल, इवन इफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज देयर इन सीडी रोम, वहां से भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. आपका अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पेन ड्राइव में भी है तभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. सो ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू बी ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम these devices to the RAM space first. So first, that's why it is called primary memory. So always OS has to be transferred from the secondary devices to the primary memory. पहला ये होता है, right? That means that is called memory management. Your memory has to be managed because आपका primary memory कितना है? बहुत ही छोटा है. Secondary memory कितना है? बहुत ही बड़ा है. Hard disk is in terabytes. Hard disk is in terabytes. Primary memory is in gigabytes. So your terabytes of program has to be managed in a gigabytes of memory. वो हो गया आपका बड़ा challenge. That's called memory management. फिर उसके बाद आता है application program. मतलब आपका huge operating system जो physical memory में नहीं बैठ सकता है, वो धीरे 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 पार्ट बाय पार्ट वो लोड हो रहा है प्राइमरी मेमोरी. उसके बाद फिर आप लोड करते हो वीबी, जावा, डॉटनेट, कुछ तो आप लोड कर रहे हो, तो वो भी उसको भी जगह चाहिए प्राइमरी मेमोरी पे. भाई थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम तुम ले लो, एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए मुझे चाहिए, लाइक दैट. इट इज अ चॉइस. दैट इज व्हाई दिस एंटायर सीक्वेंस जो है, ये इमेज यू कीप इट इन माइंड दैट हाउ ए पर्सनल कंप्यूटर वर्क्स. दिस इज हाउ इट वर्क्स. ठीक है. No program is executed from the secondary. Program has to be loaded into the primary. Operating system हो या application program. Second, operating system is loaded first. उसके बाद application program. It is not that कि both are same. No, it's not same. They are two different things. Understood? Any questions about this? How a computer and how the operating system and application program works in computer? कोई क्वेश्चन नहीं है इस पे, कोई डाउट नहीं. ओके, नाउ आई विल आस्क द क्वेश्चंस. प्रोसेसर which we are using has a particular memory वो बहुत कम होता है, around 1 MB जब भी 108 सिस्टम यूज करते हैं. तो how does the RAM के बाद का प्रोसेस है, मतलब कंपाइलर तो कंपाइल कर सकते हैं, बट हमारा आर्किटेक्चर कैसे वर्क करता है? Okay, so let's say for example, let us discuss. आपने कंप्यूटर में 4 GB मेमोरी है, इसका कंप्यूटर में 8 GB है, इसका कंप्यूटर में 16 GB है. Amount of memory in computer to computer is a choice, ना, user's choice. But operating system तो same ही है. आप भी Windows 10 यूज कर, ये भी Windows 10 यूज कर, ये भी, वो भी VB यूज करे, आप भी VB यूज कर, ये भी VB, या आप भी जाओ, आप भी जाओ, आप भी जाओ. But memory is not same. CPU is same. Memory is not same. Hard disk भी same नहीं. आपका हो सकता है आप 512 लिया, इसने 1 TB लिया, उसने 2 TB लिया, तो वो भी आप बड़ा लिया, आप छोटा लिया, वो भी हो सकता है. Understood? Memory, either primary memory or secondary memory, or like he is telling, memory within the CPU is not same. However, my compilers are same. However, my operating system is same. Is that clear? How computer works? Okay. You have different CPUs ना. आप i3 ले लो, या i5 ले लो, i7 ले लो, i9 ले लो, या आजकल वो वर्क स्टेशन पे काम कर रहे हैं, इससे भी बड़ा कोर्स है उसके अंदर, 64, 96 तक कोर्स है उसके अंदर, लाइक डेटा सेंटर्स पे. बट आई एम सेइंग फिर भी ऑपरेटिंग सिस्टम तो वही है, विंडोज, यार कंपाइलर्स तो वही है, जीबीबी, जावा, डॉटनेट वही है. So they are still same, but my memory is not same. Whether it is a L1 or L2 or L3, L4, primary, secondary, whatever, is not same. Every bit is a different capacity. That is why it is interesting that how a computer works and how computers, software, hardware works is a different altogether a structure. Have you understood this entire picture? Because every day you should question this.
क्या होता है, आज मैंने मेरे लैब पे बैठ के एक आधा सॉफ्टवेयर लोड किया, ठीक है, वो कितना मेमोरी ऑक्यूपाई किया, कुछ तो मेमोरी ऑक्यूपाई किया. देन आई एम कीप ऑन क्लिकिंग, चलो ब्राउ ये मैटलैब शुरू किया, और या कुछ आर कैड शुरू किया, कैड डिजाइन शुरू किया. इट्स मेमोरी तो उतना ही है ना, यू आर कीप ऑन एप्लीकेशंस को ओपन कर रहे हो, मेमोरी तो उतना ही है. लेकिन आपको क्या फील हो रहा है, भाई ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ऐसा फील होता है. लेकिन सीपीयू तो एक ही है, मेमोरी तो उतना ही है. अंडरस्टूड? सो दैट इज वाई कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर का जो रिसोर्सेस, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर का एप्लीकेशन प्रोग्राम, द वे इट वर्क्स, दिस इज कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम. तो द ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत बड़ा काम यही होता है कंप्यूटर पे, टू मैनेज द रिसोर्सेस. जितना भी रिसोर्सेस जो है कंप्यूटर के अंदर, उसको मैनेज कर. दैट्स द बिगेस्ट टास्क फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम. अंडरस्टूड हाउ कंप्यूटर वर्क्स? ओके, मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखा रहा हूं आपको. अभी ये स्लाइड नहीं दिखाऊंगा आपको, मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊंगा. फिर आपको फिर प्रीवियस स्लाइड दिमाग में रहना चाहिए, आधा ब्रेन में, दूसरा आधा ब्रेन में. मैं जो दिखा रहा हूँ वो देख के फिर बताओ कि फर्क क्या है. ओके, ये तो फोटो ले रहे हैं. आई सेड यूज द ब्रेन. ओके, हैव यू टेकन ब्रेन में ले इमेज? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है. अब बताओ क्या है ये, क्या इसमें क्या दिख रहा है आपको? सब लोग ऐसा आंसर दे रहे हैं जैसा आजकल वो मैगजीन्स में आता है ना, दो फोटोज देके दोनों में डिफरेंसेस बताओ तो, अरे इधर डॉट है, इधर ये है. अरे मैं वो नहीं पूछा, इधर फ्लैग है क्या, उधर बॉल है क्या. आई एम आस्किंग मेजर डिफरेंस. We have wrong version here, and also read-only memory. There नहीं, सबसे पहले आपको डिफरेंस ये दिखना चाहिए था, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का बूट प्रोसेस कॉन्सेप्ट ही नहीं. यू सेड, ओह वेरी गुड. चलो नेक्स्ट टाइम चॉकलेट देता हूँ. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम का बूट प्रोसेस का कॉन्सेप्ट नहीं है. मींस कंप्यूटर छोड़ के, मैंने आपको सुबह से ही बार बार बता रहा हूँ, कंप्यूटर छोड़ के ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जिसमें हार्ड डिस्क है. सो देयर इज नथिंग लाइक सेकेंडरी स्टोरेज कंप्यूटर छोड़ के. तो दैट इज वाई इस स्लाइड पे दिस इज फॉर आवर केस, मतलब अपना सिस्टम, एप्लीकेशन स्पेसिफिक सिस्टम. सो इस एप्लीकेशन स्पेसिफिक सिस्टम पे there is nothing like secondary storage, there is nothing like right memory management. क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज ही नहीं है तो ये सवाल कहां से आया था. सेकेंडरी स्टोरेज किया तो मेमोरी मैनेजमेंट क्यों आ रहा है? क्योंकि वो टेराबाइट्स है, ये मेगाबाइट, सॉरी ये गीगाबाइट्स है, ये मेगाबाइट्स है, तो मुझे मैनेज करना है सीपीयू को. सीपीयू मेगाबाइट्स में, प्राइमरी टेराबाइट्स में, हार्ड डिस्क गीगाबाइट्स, सॉरी ये गीगाबाइट्स में और टेराबाइट्स में, ये मैनेज करना पड़ता है. अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाई वो आपका स्लाइड में वो ऐसा था. लेकिन यहाँ कैसा है, यहाँ सेकेंडरी स्टोरेज ही नहीं है, आपका मोबाइल पे कोई हार्ड डिस्क ही नहीं है, बट फिर भी इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है. बट व्हाट इट इज सेज इज दैट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ भी है, बट इसका नाम है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. दैट्स व्हाई इन द मॉर्निंग I promise you that maybe इस साल ये पूरा कोर्स में you will be writing your own operating system. You will be writing, but उसका नाम है real time kernel. Kernel writing. Heart of the operating system is called kernel. हम लोग वो फैंसी चीज नहीं लिखने वाला जैसा यूजर इंटरफेस GUI, वो हमें वो नहीं. जो मोस्ट जो दिमाग है वो हम लिखने वाले, दैट इज कॉल्ड कर्नल. बट उसका नाम है रियल टाइम. सो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट डू यू मीन बाय रियल टाइम, वी विल डिस्कस. बट लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज, ये जो रियल टाइम कर्नल है और आपका जो
बाकी आप जो जनरली आप कंपाइलर्स वगैरह यूज करते हो, लाइब्रेरीज वगैरह जो यूज करते हो, दे आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, वापस विल गो बैक टू प्रीवियस स्लाइड. ये अलग है, ये अलग है, हमने जोड़ा नहीं है इधर. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपना तरीके से लोड हो रहा है, एप्लीकेशन प्रोग्राम अपना तरीके से लोड हो रहा है. बट हाउएवर यहाँ लिंकर, व्हाट इज अ लिंकर? जैसा अभी फर्स्ट ईयर पे आपको प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, टर्बोस या जो भी लिखते हो, व्हाट दे डू, दे क्रिएट द ऑब्जेक्ट फाइल्स एंड ऑल द ऑब्जेक्ट फाइल्स आर लिंक्ड टुगेदर. फाइनली एक ही फाइल बनता है, दैट्स कॉल्ड एक्जीक्यूटेबल फाइल. मतलब यहाँ क्या हो रहा है आपका, इवन योर ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज एप्लीकेशन प्रोग्राम दोनों को हम लिंक कर रहे हैं और एक ही फाइल बनता है. तो वही लोड होगा आपका रैम या रोम स्पेस. सो इन शॉर्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, दे आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स. एक ही फाइल बनाना मतलब आपको ही ऑपरेटिंग सिस्टम लिखना पड़ेगा अगर जरूरत पड़ा तो, और आपको ही एप्लीकेशन प्रोग्राम भी आपको लिखना पड़ेगा. दे आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स. Understood? That's why it's an interesting topic, that how to write a operating system. What is operating system? It's a आपको वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा. ओके, कंप्यूटर पे हम नहीं लिखते ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स रेडीमेड, इट इज गिवन है, वो भी खरीदना पड़ता है 10,000. ओनली ओएस इज 10,000 रुपीज. मजबूरी है, वो मेड अस हैंडीकैप्ड. लेकिन अब वही कंपनी दूसरा जगह बेच के दिखाओ, उससे उसका बस की बात नहीं है. नोबडी, नो, वही कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदो, डू यू आस्क कि माइक्रोसॉफ्ट इनसाइड है क्या? हमें नहीं चाहिए, उल्टा हम बोलते नहीं चाहिए. इसलिए हम मोबाइल में भी हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग ए मोबाइल फोन विच इज माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना. तो अब ये इंटरेस्टिंग चीज है, Nokia was the first people who manufactured the mobile phones. Microsoft is the first company who introduced Windows. दोनों साथ में आने के बाद भी उनका प्रोडक्ट नहीं चल रहा. खरीदा ना, माइक्रोसॉफ्ट हैज परचेज नोकिया कंपनी. उनको क्या लगा, चलो इनके थ्रू मैं मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम बेचूंगा. उसको उल्टा नोकिया डूब गया इसका वजह से. फिर नोकिया ने चालू किया, जाने दो, मेरा अपना एंड्रॉइड ही डाल के देता हूँ लोगों को, थोड़ा तो धंधा चलेगा, नहीं तो वो भी बंद हो जाएगा. सो दे रिवर्टेड बैक, बोल रहा है कि नहीं आप एंड्रॉइड लोड करो, कोई प्रॉब्लम. अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इट्स ए दिस एंटायर जर्नी, यू मे बी वट एवर योर ब्रांच में बी, यू मे बी कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल, हम कंप्यूटर बनाते. ठीक है ना. ये सब, ये कोर्स वर्क इज ऑल अबाउट वी सिंगल बोर्ड कंप्यूटर मीन्स वी बिल्ट आवर ओन सिस्टम which includes operating system as well as application program. It's an interesting subject. It is a lifelong, never ending thing where आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि what is operating system. जो कंप्यूटर में है वो मैं कैसा, how can I build my own. Okay, understood why it is interesting? But I am saying ingredients are same. मैं आपको कोई दूसरा दुनिया का कुछ आप लोग सर आपके हम लोग को कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा रहे क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहे क्या, टेलीकम्युनिकेशन पढ़ या कुछ अलग पढ़ा रहे क्या? कुछ नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूँ, यही है कंप्यूटर पे है. मैं अभी भी वही बता रहा हूँ, अभी भी मैं यही इसका ही बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट टीचिंग समथिंग न्यू विच यू आर, आई मीन विच इज नॉट इंटरेस्टिंग एरिया. ये आपको लगता है ना, मैं कंप्यूटर गए यार, मैं स्टूडेंट्स हो गए, मुझे यही पढ़ना है. मैं भी बता आपको अभी भी यही पढ़ा रहा हूँ. बट हाउएवर ये हमारा चॉइस है. हाउएवर कंप्यूटर, व्हेन यू से कंप्यूटर, उसमें कोई चॉइस ही नहीं. व्हाटएवर इज गिवन यू हैव टू यूज इट. दैट्स द डिफरेंस. अंडरस्टूड दैट operating system application programs are together when we develop for a specific application. Okay, so that's why today's one of the topic is that compare personal computer versus other than computer.
दैट्स व्हाट वन ऑफ द टॉपिक आई हैव मेंशन्ड. कैन यू लिस्ट आउट? ठीक है, आप मोबाइल फोन ले लो, चलो मोबाइल फोन का फीचर्स एक साइड लिख रखो, पर्सनल कंप्यूटर का फीचर्स एक साइड, एक 10 पॉइंट्स आप मुझे लिख के बताओ, इसमें क्या है, इसमें क्या है, लाइक दैट कंपेयर. और यू टेक this type of problem. So the Microsoft is giving us their own voting system through the hard disk we have, right? So we can also build a similar type of pattern, right? But if we want a voting system, then we can also give our system a voting system, right? जैसा लिनक्स है ना अभी, हाँ, आपको विंडोज नहीं चाहिए तो लिनक्स ले लो, कोई प्रॉब्लम. लिनक्स में भी काफी सारे टाइप्स है, कोई उबुंटू यूज करता है, कोई हॉट डॉग, कोई रेड हैट, कोई है 10-15 टाइप्स है. बट हाउएवर सब लोग का प्रोसीजर यही है. कंप्यूटर पे आप लिनक्स यूज करो, विंडोज यूज करो, किसी का भी यूज करो, एंटायर प्रोसेस इज सेम. ओके, प्रोसेस इज नॉट डिफरेंट. बट हाउएवर यहाँ जो है ना, यहाँ इज डिफरेंट. इट्स नॉट सेम प्रोसीजर बिकॉज यहाँ हार्ड डिस्क ही नहीं है. यहाँ हम ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदते भी नहीं है, ठीक है, वी डोंट बाय इट नो. जैसे आपका टीवी नो, व्हेन यू बाय स्मार्ट टीवी, वो आपको 5-6 ऑप्शंस देता है. वेब ओएस चाहिए क्या, या एंड्रॉइड चाहिए आपको, नो यू कैन चूज ना व्हाइल बाइंग द टीवी कि कौन सा ओएस चाहिए आपको. या आपका कार के अंदर वो डैशबोर्ड पे रहता है, कौन सा ओएस चाहिए, वो चॉइस रहता है, योर चॉइस. So these are all called application specific operating system. So इसलिए this is interesting area. Can I write my own operating system along with the application program? Understood? It is too early, I know for you, but then ये तो हम हर रोज देखते हैं ना हम लोग. Every day we see computer. ये जो हम लोग every day what we see only I am talking. Nothing new. And that's why I am repeatedly saying that. कंपेयर योर सेल्फ. कोई भी आप प्रोडक्ट देखते हो, चलो वॉशिंग मशीन, कंपेयर वॉशिंग मशीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वर्सेस कंप्यूटर. एवरीथिंग आप हर रोज कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो, कंपेयर विथ कंप्यूटर, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल बोर्ड कंप्यूटर वर्सेस नॉर्मल कंप्यूटर. कैलकुलेटर ले लो, चलो कंपेयर कैलकुलेटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर विद द कंप्यूटर, कंपेयर करो, एक 5-6 पॉइंट लिख लो. देन यू विल एंजॉय दैट. यस, आई अंडरस्टूड ट्रूली व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिकेशंस ऑफ ए सिस्टम. अदरवाइज हम लोग आजकल आंखें बंद करके हर प्रोडक्ट को खरीदते हैं. हाँ, ये इनसाइड है क्या, चलो ले लो. अरे लेकिन हाउ मेनी पॉइंट्स यू अंडरस्टूड, हाउ मेनी पॉइंट्स यू अंडरस्टूड. ब्लाइंडली हम लोग वो ले लेते हैं उसको विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट डू यू मीन बाय फीचर्स ऑफ ए सिस्टम. ओके, ठीक है, मैं आपको बताता हूं फ्यू पॉइंट्स क्विकली. आप क्या देखना चाहिए पर्सनल कंप्यूटर पे. चलो ये 3 चीज तो आपको मालूम है, इंटेल, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट. कंप्यूटर मींस ये 3 ही लोग हैं, कंपनीज. भले मैन्युफैक्चर एक 10-15 कंपनीज हो, बट कंप्यूटर का डिजाइन किसने किया, आज भी किसका डिजाइन है, वो आईबीएम का. Understood? Computer is always designed by IBM. IBM designer. Whatever you use the computer is a IBM architecture, popularly known as a IBM personal computer. There's no doubt about it. Anywhere you go in the world. Which CPU are you using? Only Intel. Which operating system you are using? Only Microsoft. चलो, तो अभी आपको समझ में आ गया कंप्यूटर मीन्स ये 3 चीजें. इसको बाजू में रखो आप. और वर्ल्ड में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट में नहीं है, ये 3 उसमें यूज होता है. ये तीनों मिले हुए हैं, ये गैंग है. ये तीनों मिलके ये कंप्यूटर का बिजनेस चला रहा है. ओके, वो आपको मजबूरी कर रहे हैं. हर साल नया कंप्यूटर आया तो वापस वही ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करो. मतलब उनका धंधा तीनों को चलना चाहिए. ऐसा नहीं होगा कि यार मेरे पास 10 साल पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं और एक 10 साल चलाऊं. वो करने नहीं देगा. वो बोले मैं आपका अपग्रेड्स बंद किया, आपको सपोर्ट से बंद किया, आपको वापस खरीदना पड़ेगा. ऐसा आपको इतना मजबूरी करेंगे
नया कंप्यूटर, नया ऑपरेटिंग सिस्टम, नया एवरी टाइम ये दैट्स वाई ये लोग है ना थोड़ा इट्स अ रैकेट, बिग रैकेट, बट इनका बाहर नहीं चलता है ना, यू डोंट फाइंड इन अदर एप्लीकेशंस में ये तीनों मिलके कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, ठीक है। ये साइड पे रखो ये तीन चीजों को, बट अदरवाइज लुक एट द कंप्यूटर, व्हाट इज दैट फर्स्ट यू सी इज दैट resources is not a big challenge in computer. Okay, for example, आप कंप्यूटर सामने लेके बैठा है ना, यू आर टाइपिंग ए प्रोग्राम, आपको कभी डर लगता है कि यार मेरा प्रोग्राम इसमें सेव होगा कि नहीं? कभी डर नहीं लगता। लेकिन मैं बता रहा हूं कंप्यूटर को बाजू में रखो, जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं ना, हमें डर लगता है यार मेरा प्रोग्राम बैठेगा कि नहीं। मैं बता रहा हूं मेरा एक्सपीरियंस में एक जमाना था हम लोग को खाली 256 बाइट्स का मेमोरी था, बस 2 बाइट्स और चाहिए था, लेकिन हमारा प्रोडक्ट फेल हो गया, 2 बाइट्स कम पड़ रहा था, मेमोरी उतना नहीं है, ठीक है। ये हमेशा ये चैलेंज रहता है कि रिसोर्सेज जो है हमेशा लिमिटेड है कंप्यूटर छोड़ के। कंप्यूटर में हमें कभी लगता नहीं है कि यार मुझे ये कम पड़ रहा है, वो कम पड़ रहा है, ऐसा आपको लगता है क्या? यू राइट सम प्रोग्राम, वो आपको प्रिंट करना है, आपको कभी लगता है कि यार स्क्रीन में बैठता है कि नहीं? आपको कभी नहीं लगता। लेकिन मुझे लगता है, अभी समझो मैं एयर कंडीशनर के ऊपर डिस्प्ले कर रहा हूँ, मुझे मालूम है उधर 16 कैरेक्टर से ज्यादा मैं डिस्प्ले नहीं कर सकता, फिर मैं पूरा इंफॉर्मेशन कैसा डिस्प्ले करूँ? मुझे 100 बार सोचना पड़ेगा इतना छोटा सा एलसीडी पे क्या क्या फिट करूँ, मुझे हमेशा सोचना पड़ता। लेकिन यहाँ वो जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आप एक स्क्रीन नहीं तो दूसरा स्क्रीन, नहीं तो रेजोल्यूशन आप बढ़ाते जो बड़ा स्क्रीन ले लो, वट एवर यू कैन डू, अंडरस्टैंड। इसीलिए आप या चलो पावर सप्लाई का ही देखो, आपको वो कंप्यूटर के अंदर एसएमपीएस जो है पावर सप्लाई, कितना पावर लेता है वो? राइट, अराउंड 500 वैट्स, 500 to 600 watts of power. Do you understand? 500 watts means half a kilowatt. हाफ ए किलोवाट का आपका वो डब्बा ले रहा है, वही यहाँ आपको मिली एम्पियर्स में चला रहा है। जैसे मैं रॉकेट सैटेलाइट्स का उसका पता है, सेल्फ गाइडेड थिंग्स के कितना पावर कंजम्पशन, कितना लेस पावर कंजम्पशन में चलाना है, बहुत ही बड़ा चैलेंज है। सो दैट मीन्स मैं कोई भी चुन रहा हूँ यहाँ, मुझे एक टेंशन आता है यार ये ज्यादा पावर खींच रहा है, अभी क्या करूँ, मेरा प्रोडक्ट फेल हो जाए। लेकिन कंप्यूटर में कोई टेंशन नहीं, वो तो ग्रिड से ले रहा है, वो हम लोग कभी कभी बंद भी नहीं करते, ऐसे छोड़ के चला जाता है लैब्स पे, क्योंकि बैटरी पे नहीं चल रहा है, तो पावर सप्लाई एट द मोस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, बट आपका कंप्यूटर तो बंद नहीं होगा, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट फेल होता है अपना। सो इवन पावर इज नॉट ए इश्यू। चलो और एक फीचर ले लेते हैं, आपका कंप्यूटर का एक हाफ kg वेट बढ़ा दिया, आपको कुछ फर्क पड़ता है क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप थोड़ी उठा रहा है उसको, वो तो टेबल पे ही पड़ा है। लेकिन इसका एक 100 ग्राम वजन बढ़ा है इसका, ये तो बहुत हेवी है, नहीं चाहिए। लैपटॉप भी हम लोग इतना लेस वेट है, हम देखें तो इधर प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? सो कंप्यूटर में जितना भी रिसोर्सेस है, आजकल मेमोरी भी इनफाइनाइट हो गया कंप्यूटर पे। यू आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट कंप्यूटर मेमोरी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, कंप्यूटर को इंटरनेट पे कनेक्ट किया, फिर AWS इधर उधर क्लाउड पे स्पेस खरीद लिया, तो जितना चाहिए उतना डंप करेगा। इसलिए हर रोज हम लोग मोबाइल से सेल्फी सेल्फी सेल्फी, कितना सेल्फी लेगा अपने आप को? दिन में कम से कम 100 सेल्फी लेते हैं, बिकॉज यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कि वो अपना चेहरा जो है वो बैठेगा कि नहीं बैठेगा, क्योंकि वो सब जा रहा है क्लाउड के ऊपर जा रहा है। और उसने और एक धंधा शुरू कर दिया, उसने आपका ही सेल्फी लेके वो बिजनेस कर रहा है उधर, ठीक है ना। जितना भी सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह, कंटेंट किसका है? आपका है। फोटोस आपका है, वीडियोस आपका है। रिचेस्ट फेलो कौन है? वो है, आप नहीं। कंटेंट आपका है, उसका कोई कंटेंट निकाली, उसने प्लेटफॉर्म बना के दिया, आप आपका इमेजेस आपका सब आप उधर डाल दो। सो कंटेंट इज यूजर्स कंटेंट, रिचेस्ट फेलो इज दैट वे, नॉट यू। That's the difference. Understood? So that is why when it comes to personal computer, आपका रिसोर्स जो है कोई चैलेंज नहीं। और उल्टा हार्ड डिस्क कम पड़ गया, निकालो और एक हार्ड डिस्क डाल दो। मेमोरी कम पड़ गया, चलो और एक मेमोरी DD RAM ले लो, डाल दो, डबल हो गया।
एवरीथिंग, मदरबोर्ड में सीपीयू कम पड़ रहा है, ड्यूअल सीपीयू आता है, चलो वो डाल दो, व्हाटएवर, या ये कम वर्क स्टेशन ले लो, वर्क स्टेशन नहीं है जाओ आपका वो डेटा सेंटर है और भी है, व्हाटएवर. सो यू नेवर फील कि मुझे रिसोर्सेस कम पड़ रहा है मेरा एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए. ठीक है, अभी इलेक्शन आ गया, इलेक्शन आ गया मतलब कितने डेटा चाहिए, करोड़ों का, क्रोर्स ऑफ पीपल का डेटा चाहिए इलेक्शन में. ठीक है, एनालिसिस करना है कौन जीतने वाला है, मतलब ऑल ऑफ ए सडन मुझे ऐसा चाहिए कि क्विकली 1 महीने के लिए ह्यूज रिसोर्सेस चाहिए. वही बात नहीं, मैं एक AWS है किसी को, चलो पैसा ले लो, मुझे इतना मेमोरी स्पेस दे दो, इतना कंप्यूटेशन पावर दे दो, मुझे एक आधा एल्गोरिथम रन करना है, कौन जीतने वाला है, बस हो गया. 1 महीने के लिए भाड़े पे लिया, बस खत्म हो गया, बस अभी मेरा काम हो गया, नहीं चाहिए. मेरा कौन सा वेस्ट हो गया, खाली तो मैंने टाइम और स्पेस के लिए पैसा पे किया, नथिंग. बट मुझे जो चाहिए वो मिल रहा है ना. अभी मुझे वेदर फोरकास्टिंग करना है, मुझे ना प्रिडिक्ट करना है, कुछ ये करना है, जितना चाहिए उतना मिल जाता है आपको, बस विद इन. ऐसा एक जमाने में था कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता था ना, यू हैव टू बाय ऑल दोस वर्क स्टेशंस एंड ऑल, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओ, फिर एल्गोरिथम्स लिखो, ये इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट. डर क्यों लगता था उस जमाने में, क्योंकि थिंग्स आर गेटिंग ऑब्सोलेट, 2-3 साल में के बाद वो सर्वर्स वेस्ट, सब कुछ वेस्ट. लेकिन आजकल कुछ भी नहीं है वो भी, क्योंकि एवरीथिंग इज अ सर्विस. So that is why when it comes to desktop, ऐसा लग रहा है कि आपका desktop as if your desktop is a super computer. You can do that from your home. You can get all the capabilities of high performance computing because you are connected on the cloud. Understood? तो ये सब एक साइड का कहानी है. But you now look at the other than computer. हर चीज is a challenge. Everything is a challenge. इसमें भी लोग थोड़ा वो एडवांटेजेस उठा रहा है, जैसा मोबाइल का डेटा जो है वो मोबाइल पे स्टोर नहीं है आजकल, वो क्लाउड पे जा रहा है, लाइक दैट. सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये जो कॉन्सेप्ट अभी क्यों पिकअप कर रहा है इस एरिया में भी, क्योंकि अगर आपको ये AIML वगैरह इंप्लीमेंट करना है, डेटा चाहिए. जैसे आपके पास कैमरा है, सर्वाइलेंस कैमरा, तो सर्वाइलेंस कैमरा इज नॉट ए कंप्यूटर, राइट, इट्स ए IoT एप्लीकेशन. लेकिन वो सर्वाइलेंस कैमरा आपको क्या चाहिए, आपको डिटेक्ट करना चाहिए. ठीक है, इमीडिएटली, मतलब एक कंपनी में 10,000 एम्प्लॉइज है, वो खुद ही आपको डिटेक्ट कर रहे हैं, ये आ गया इसका अटेंडेंस, ओके डन. हाउ दैट इज पॉसिबल? आपको डेटाबेस चाहिए ना पूरा 10,000 एम्प्लॉइज का, इट शुड स्टोर, बट इट इज कनेक्टेड ऑन इंटरनेट. तो इसलिए वो सर्वेलेंस कैमरे के अंदर नहीं है उतना मेमोरी, इट्स ओनली टेकिंग द इमेज एंड सेंडिंग बैक टू द क्लाउड प्लेटफॉर्म, उधर एनालिसिस कर रहे हैं, फिर वापस आपको डिटेक्ट करके आपको बता. सो द IoT का एडवांटेज यही है कि जो आप यहाँ नहीं कर सकते हो वो हम लोग रिमोटली कर. अंडरस्टूड? बट फिर भी इट्स नॉट ए कंप्यूटर, इट्स ए डिवाइस. इज इट क्लियर हाउ टू कंपेयर ए डेस्कटॉप systems versus other than desktop systems? What is that you should look for? Why this comparison is, why this, always we say that the Microsoft, Intel and IBM versus the other things, क्योंकि आजकल other than computer का application जो है बहुत है everywhere. That's why the demand is. So that's why we should look at the other opportunities. Any questions so far? I think morning somebody was asking. Whatever is the terminology I am using, the keywords I am using, am I confusing you or you understand the significance of it? Okay. Okay. So the question is, हम लोग क्यों कर रहे हैं सब? ठीक है. Why are we computerizing the objects? आप एक नॉर्मल टीवी था पहले, अभी उसको इंटरनेट देके आप क्यों इंटरनेट दिया टीवी को आपने ना, मतलब क्या चाहिए आपको? नो इंटरनेट क्यों दिया टीवी को? व्हाई डू यू वांट इंटरनेट? पहले टीवी था, वो टीवी हम लोग कैसा देखते थे, छत के ऊपर एक एंटेना रहता था,
कुछ एल्यूमिनियम का यूरो, आपको याद है वो डाइपोड्स ऐसा, फिर वो घुमाओ उसको ऐसा ऐसा सिग्नल आएगा, ऐसा था ना, जो दूरदर्शन का वगैरह। आपका जनरेशन नहीं, बट जब आप कुछ फिल्म्स में देखा होगा, इट्स लाइक दैट। देयर वाज नो सेट टॉप बॉक्स, देयर वाज नो सैटेलाइट कम्युनिकेशन। जैसा मुंबई में भी एक दो प्लेसेस में बहुत बड़ा टावर है, towers will transmit, and you have an antenna on your building that will receive, and it's a free broadcasting, not a digital, it's analog. ठीक है, जो आज भी हम लोग एफएम रेडियो में हम यूज करते हैं ना, एंटेना को बढ़ाओ, गेट अ सिग्नल लाइक दैट। उसके बाद क्या हो गया, केबल का आ गया, केबल कॉन्सेप्ट कि भाई एंटेना, बिल्डिंग में एंटेना का जरूरत नहीं है, देयर इज अ केबल वायर कम्स, यू कनेक्ट टू योर टीवी and then you can watch whatever you want. तो उसमें एडवांटेज क्या हुआ था, वह बिल्डिंग में चढ़ के उसको एंटेना को घुमाने का जरूरत नहीं, या बारिश आ गया तो फिर सिग्नल पिकअप नहीं कर रहा है, वाइट नॉइस आ रहा है, ये सभी प्रॉब्लम्स था। अभी वो सब नहीं रहा केबल आने के बाद। फिर क्या हो गया कि भाई डिश एंटेना आ गया। डिश एंटेना आने से क्या हो गया कि भाई वो केबल वाला का भी झंझट नहीं, वो कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, कि आप खुद अपना बिल्डिंग के ऊपर आपका डिश एंटेना है जो डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्टेड है। ठीक है, यू आर रिसीविंग नॉट फ्रॉम द ट्रांसमीटर, सैटेलाइट, थ्रू सैटेलाइट इट इज रिसीविंग सिग्नल। अब उसके बाद वो लोगों ने क्या किया, पेड सर्विस। पेड सर्विस मींस जब तक आप पैसा नहीं भरोगे वो सैटेलाइट से आपका टीवी में सिग्नल नहीं आएगा। ठीक है, वही सेट टॉप बॉक्स में विद पेड सर्विसेज। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, वो भी आउटडेटेड हो गया। अभी बोलते हैं कि आप ये सब का जरूरत नहीं है, यू कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ना केबल का जरूरत है ना डिश का जरूरत है, कुछ नहीं है, आप बैठे बैठे आप इंटरनेट से देख लो जो भी चैनल्स है। सो दैट मीन्स एक टाइम पे सिग्नल, एनालॉग सिग्नल से हम लोग टीवी को कनेक्ट करते थे, ट्यूनिंग करते थे चैनल को। अभी कुछ भी नहीं है। द वे वी वॉच द मूवीज ऑन मोबाइल फोन्स एंड कंप्यूटर्स, similarly we are watching them on a TV. What does it mean? It means it is a digital contents. Binary is coming, no, not analog signal. So जब ये डेटा आ रहा है आपको टेलीविजन के अंदर, ये डेटा कहाँ से आ रहा है आपका टीवी में? अभी आप हर रोज whatever you are watching through इंटरनेट, वो कहाँ से आ रहे हैं वो सारे चैनल्स? क्या डेटा सेंटर से, राइट? इसका पहले कहां से आता था? हाँ, मतलब सैटेलाइट में स्टेशन से, स्टूडियो से आता था। जी स्टूडियो, स्टार स्टूडियो, these are all स्टूडियो से। व्हाट डू दे डू? दे ब्रॉडकास्ट। मतलब वो आप क्या देखना चाहिए वो कौन डिसाइड कर रहा है? वो डिसाइड कर रहे हैं ना पहले। वो स्टूडियो में फॉर एग्जाम्पल 9 o'clock को सास बहू सीरियल, तो पूरा एंटायर कंट्री को वही देखना है आप। और वो कितने साल से देख रहे हैं? 7 साल से वही सास बहू देख रहे हैं। ठीक है, हम बूढ़े हो गए लेकिन वो उनका झगड़ा अभी भी चल रहा है, समथिंग लाइक। सो मतलब यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, वॉट एवर दे ब्रॉडकास्ट, और उसमें भी जन्म लेते रहते हैं वो लोग ये जन्म 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 और बीच में वो हीरो हीरोइन छोड़ गए तो और 2-3 लोग इसमें आते हैं, तो ये स्पेस कौन है यार? नहीं, उसका रिप्लेसमेंट है। व्हाटएवर, ऑल फनी थिंग्स। ओके, सो ये था पहले जनरेशन, राइट? आपका मतलब आपका पेरेंट्स ये सब टॉलरेट किया। लेकिन आपका जनरेशन में क्या हो रहा है? मुझे जो देखना है चैनल में वही देखूंगा। ठीक है, फॉरगेट अबाउट चैनल, सीरियल्स। जो पिक्चर मुझे जो देखना है मैं वही पिक्चर देखूंगा। जितने बार देखना है मैं उतने बार देखूंगा, जितने बार रिपीट करना है मैं उतने बार रिपीट करूंगा, वॉट एवर ऑन डिमांड। ये कब पॉसिबल है? बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू ए डेटा सेंटर, नॉट ए स्टूडियो। ठीक है, दैट मीन्स दिस एंटायर इंफॉर्मेशन, सीरियल्स, पिक्चर्स इज स्टोर्ड इन ए डेटा सेंटर ना, हार्ड डिस्क में उधर स्टोर्ड है। तो जैसा आप कंप्यूटर से देखते हो वैसा यू आर कनेक्टिंग टू द डेटा सेंटर एंड यू आर वाचिंग। So if you want to connect to the data center, what you require is a connectivity which is happening through internet TCP/IP protocols. Understood? Computerization means अभी आपका टीवी को computerization आपने किया,
यू आर फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, इससे कितना लाइफ में फर्क आया कि नोबडी इज वाचिंग नाउ वो सीरियल्स, नोबडी इज वाचिंग व्हाट एवर द एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह हमको नहीं चाहिए, मुझे जो देखना है मुझे देखना है। और वो अभी अभी वो बिजनेस कहाँ तक चला गया कि मतलब बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, फिल्म स्टूडियोज, instead of releasing those films in the theaters, they prefer to release it on the data centers, OTP देके। क्यों? क्योंकि थिएटर में अगर मैं रिलीज करता हूं तो वो पायरेटेड होता है, ठीक है, इमीडिएटली कॉपी होके इधर उधर। तो उससे अच्छा अगर इसमें मैं रिलीज कर देता हूँ, जितना मेरा इन्वेस्ट किया कम से कम उतना तो मेरा रिकवरी तो श्योर शॉट है, कोई खरीद रहा है समझो 200 करोड़ में, उतना तो मुझे मिल रहा है। लेकिन थिएटर में अगर मैं रिलीज किया, मालूम नहीं पब्लिक को पसंद आएगा कि नहीं, पायरेटेड होगा, कितने प्रॉब्लम्स है। सो पीपल आर प्रेफरिंग more day by day more on OTPs than the theaters. This is the reality. So, but nowadays OTT से भी लोग pirate कर देते हैं, within one or 2 hours movies are available. तो वही है ना, अभी वो जनरेशन है ना, अभी आपका जनरेशन के लिए डिफरेंट चैलेंज, ठीक है। ओके, तो मुझे किसी ने yesterday ना, मैं जब ये व्हाट्सएप में आपका ग्रुप बना रहा था ये, तो देन आई हैड दैट प्रॉब्लम ना, ग्रुप का साइज जो है पहले 256 था ना व्हाट्सएप ग्रुप, फिर बाद में ये लोग बढ़ाया था 512 किया था, मुझे कल ही पता चला कि 1024 तक ये लोगों ने ये बढ़ा था। तो ही ओनली टेलिंग मी, सर आप टेलीग्राम ले लो, उसमें पायरेटेड फिल्म्स भी मिलते हैं उसमें और मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो इमीडिएटली मैंने इंस्टॉल किया टेलीग्राम मुझे लगा ये ऑलरेडी 1000 तक आ गया तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, सो एक बार इंस्टॉल कर, नॉट फॉर पायरेटेड फिल्म्स आई थॉट कि अभी, क्योंकि अदरवाइज मेरा लिमिट हो जाएगा फिर, देन आई थॉट इंस्टॉल व्हाटएवर। ओके, सो व्हाट इज द टॉपिक कि व्हाई आई एम डिजिटाइजिंग द ऑब्जेक्ट्स। मैं मतलब धीरे 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 मैं व्हाई आई एम कंप्यूटराइजिंग द थिंग्स, क्योंकि डिजिटाइजेशन मतलब जो कन्वेंशनली जो सिस्टम्स थे, जो एनालॉग थे, मैं उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ऐसा मैं आपको पूरा दिन भर भी एग्जांपल्स दे सकता हूँ, बट क्विकली और एक दो एग्जांपल्स। आजकल हम लोग ब्लड टेस्ट करना है, से आई एम ए डायबिटिक लास्ट 20 years, so I have a sugar, so I'm supposed to test my blood frequently, no, मेरा blood के अंदर sugar कितना। So when I got this diabetic in 2003, I was at IIT Bombay. I was doing, so जब if you join IIT Bombay, diabetic automatically आ जाते हैं ठीक है। So it's all, no, what do you call, pressure, stress, okay. So I no, first time it was detected I am a diabetic. तो लेकिन फिर यही तो प्रॉब्लम है कि IIT में हॉस्पिटल है, सो घर से सुबह उठ के देन शी सेज कि भाई आप फास्टिंग करो, 12 घंटा खाना मत खाओ वगैरह वगैरह। देन सुबह सुबह अराउंड 7 o'clock मुझे बोरीवली से पवई जाओ, देन ब्लड सैंपल दो, देन शी विल कॉल मी एट 3 o'clock, फिर ऐसा ना, दैट्स द रूटीन। 2003 का स्टोरी है। अब क्या है, हम लोग आपको मालूम है, घर पे बैठा कब चेक करना है, चलो एक स्ट्रिप निकालो, डालो, कितना ब्लड, और उसका कॉस्ट भी कितना है, मुश्किल से 20 रुपीज है, 25 रुपीज एक स्ट्रिप का कॉस्ट। सिमिलरली ब्लड प्रेशर, मुझे कोई लैब को जाने का जरूरत नहीं, डॉक्टर के पास बीपी चेक करना है, चलो लगा दो, आई कैन सी माई बीपी, ठीक है। वो भी अभी वैसा कोविड पीरियड पे हम लोग को मालूम कि भाई आपको बाहर जाने का जरूरत नहीं, घर पे बैठ के ही आपको कोविड टेस्टिंग का कुछ। सो व्हाट इज दिस? दिस इज डिजिटाइजेशन। ए कंट्रोलर, ए सेंसर, ए पेरिफेरल व्हिच इज इनबिल्ट, और यहां तक डिजिटाइज किया कि इट इज सो स्मार्ट, द व्हाटएवर इज दैट एल्गोरिथम व्हिच इज रनिंग, इट इज डिटेक्टिंग, इट इज इंडिकेटिंग, एंड इट इज सच ए लो कॉस्ट, आप फेंक भी रहे हो उसको, नो, ऐसा नहीं कि वापस उसको यूज कर रहे हैं, ना, यूज कर फेंक, बस ऐसे यूज एंड थ्रो टेक्नोलॉजीज, अंडरस्टूड।
What do you mean by digitization of the objects? मतलब बायो हेल्थ केयर सेक्टर में भी लैब ऑन चिप, हेल्थ केयर सेक्टर में लैब, ए पैथोलॉजी लैब ऑन चिप. एवरी कस्टमर इज हैविंग ए लैबोरेटरी ऑन चिप. दैट्स वाई मोबाइल का आजकल इतना बिजनेस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मोबाइल इज नॉट फॉर मेकिंग ए कॉल. इतने सारे एप्स है, इतने सारे बिजनेस मॉडल्स है. जो आपका फाइनेंशियल सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, पता नहीं और क्या क्या लोग इतने एप्स बनाया. कोई डिस्टेंस भी मेजर करना है तो मोबाइल यूज कर सकते हैं. आजकल मोबाइल से आजकल एसी भी कंट्रोल कर रहे हैं बच्चे लोग क्लास में बैठ के. रिमोट का भी जरूरत नहीं. आई डोंट नो व्हाट नॉट हाउ मेनी एप्स आर पीपल आर डेवलपिंग. इसके अंदर इतने सारे सेंसर्स आर इंटीग्रेटेड लाइक ये फिटबिट, ये जो भी वॉचेस है, whatever, no, what is the size of these devices and digitization? जो आप whatever you are doing, that entire data is not stored in this watch. वो आपको वापस मोबाइल से कनेक्ट कर रहा है या आपका उनका क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर वो आपको डाल के बता रहा है कि ग्राफिकली आपको इंडिकेट कर रहा है व्हाट इज द हाउ मेनी कैलोरीज यू हैव बर्न्ड और व्हाट योर हेल्थ केयर, सब कुछ बता रहा है ना. वो डेटा एनालिसिस करके दिखा रहा है. अंडरस्टूड what is digitization, advantage of digitization? It is everywhere and so many things are yet to come, yet to happen. Okay, last example. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज एक, हमने सोचा हर इन्वेंशन वी थॉट कि एक अच्छा चीज के लिए हो रहा है. अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द इन्वेंशंस जो है बैड थिंग्स के लिए यूज हो जाता है. ठीक है, अभी मोबाइल फोन एक्चुअली इट इज मेड फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन, बट वो छोड़ के बाकी सब करते हैं. ठीक है, गेम्स और व्हाट नॉट, ऑल नॉनसेंस थिंग्स वी आर यूजिंग. सिमिलरली ड्रोन्स हम लोग किसके लिए इन्वेंट किया था कि कुछ मेडिसिन डिलीवरी, ऑर्गन्स डिलीवरी, लेकिन आजकल वो लोग बॉम्ब्स डिलीवरी क्या ड्रग्स डिलीवरी, वो सब के लिए वो यूज कर. ठीक है, सो एनीथिंग नो लाइक व्हेन मैडम मेरी क्यूरी वगैरह वो लोग फिजिक्स साइंटिस्ट जब ये इन्वेंट किया था एक्सरेस वगैरह, वो लोग किसके लिए किया था ये सब? टू क्यूर द कैंसर वगैरह. लेकिन अभी किसके लिए करते हैं? न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ये एवरी टेक्नोलॉजी लाइक दैट. नाउ कमिंग बैक टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जो है एक्चुअली किसके लिए पर्पस इज व्हाट? थोड़ा प्रिडिक्ट करो भाई बारिश हो रही कि नहीं, या कुछ वेल बीइंगनेस ऑफ द ह्यूमंस. लेकिन अभी ये लोग कहाँ यूज कर रहे हैं? डिफेंस सेक्टर पे, मिसाइल्स में. ठीक है, अब जैसा रिसेंट अटैक्स जो चल रहे हैं, अंडरस्टूड. अब एक रिसेंटली आई मीन you can, what is that you can have? That missile has the ability to scan the object and hit the object. फॉलो करता है, आपका पीछे फॉलो करेगा. ठीक है, गाइडेड. वो भी अभी एक टेररिस्ट था, अफगानिस्तान में था. अब अफगानिस्तान इज रूल्ड बाय नॉट ए प्रॉपर government, it is in some other people, but however Americans wants to kill one fellow, where Americans cannot go there. abhi unka haath mein control pe to nahi, but what they have done, they have used a drone. The drone is fitted with a missile and the drone has traveled several countries, kyunki wo log they are at some other place na, wahan se wo drone aake, you can read that article very nicely. And then that they have monitored through satellites, they have monitored this terrorist is in this house, is staying there with all sort of protection and all. So they understood कि ये morning इस time पे brush करने के लिए कुछ इस time पे बाहर आता है something. So exactly वो drone उस time पे आएगा, वो wait करेगा, वो missile जो है और किसी को भी डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, एग्जैक्टली उसको ही खत्म करके वो ड्रोन चला. सो व्हेन यू आर एनीवेयर इन द कंट्री, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इफ दे वांट दे कैन फॉलो यू. सो
नाउ इमेजिन एआई जो है कितना डर लगता है हम लोग को कि ये जो डेटा जो है आजकल हम लोग ब्लाइंडली अपना डेटा ये जो पब्लिक डोमेन सोशल डोमेन्स पे हम लोग अपलोड कर रहे हैं हम लोग कोई भी ऐप डेवलप किया तो हम लोग क्या करते हैं अलाउ 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 ऐसे देते हैं फ्री में दिया अरे अलाउ 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 मतलब क्या कर रहा है तुम्हारा पूरा डेटा उसको दे रहे और वो आपके साथ क्या करने वाला है हमें नहीं मालूम you have permitted everything they can know you they know you your geographical location they know your data your path everything they know they have captured so how it that's why all these companies को वो लोग डेटा बेचते तो इसलिए आपको यू आर सरप्राइज्ड कि भाई उनको कैसा मालूम कि मुझे जूता खरीदना है उनको कैसा मालूम है कपड़ा खरीदने वाला दे नो योर इंटरेस्ट योर इमोशंस तो जब तक वो खरीदेगा नहीं आपके पीछे ही पड़ेगा बिकॉज दे नो एवरीथिंग अबाउट यू सो दे आर कैप्चर्ड दैट ये एल्गोरिथम्स आर वर्किंग ऑन इट ओके सो ये चीज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ये आप डिवाइस तक आ गए इट्स नॉट ओनली रनिंग ऑन ए बिग प्लेटफॉर्म्स एक मिसाइल के अंदर भी वो फिट कर सकता है एंड दैट फेलो नोज हाउ टू स्कैन हाउ टू फॉलो हाउ टू डिटेक्ट हाउ टू हिट जैसा हम लोग नो वी हैव they can fingerprint recognition face recognition they are there in the devices itself इसके लिए बड़ा data center का जरूरत नहीं is that clear what is the digitization of the objects and information engines and numerical most importantly why you are studying these subjects mathematics is because this is all about numerical techniques mathematics smart algorithms that's the why we are saying computerization of the objects अभी आते हैं constraints अपना एरिया क्या है like I told you compare computer versus other than computers so that means our area is all about constraints okay so we have to all our applications are constraints so we have to design our applications in a constrained environment okay say for example if you are designing any product or let's say flight control engines brakes ठीक है अगर आपको वैसा डिजाइन करना है आपका प्रोडक्ट डू यू नो यू रिक्वायर ए सर्टिफिकेशन बिना सर्टिफिकेशन का ये प्रोडक्ट आप नहीं बना सकते ठीक है you require a certification otherwise you are not supposed to sell it in the market also you are behind the bars so there are some certain products for example healthcare पे कोई भी प्रोडक्ट हेल्थ के लिए बनाओ देयर आर सम एजेंसीज वेयर यू नीड देयर सर्टिफिकेशन बिना सर्टिफिकेशन का आप बेच नहीं सकते वो प्रोडक्ट एंड फॉर एग्जांपल लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट दैट चंद्रयान रोवर्स नासा का जो भी प्रोजेक्ट्स है दिस आर ऑल व्हाट मिशन क्रिटिकल व्हाट इज मिशन क्रिटिकल मतलब वो लोग 20-25 साल रिसर्च करके यू नो इतना इंजीनियर्स इतना मनी hundreds and thousands अभी नासा का बजट कितना है $22 बिलियन जो अपना बजट $1 बिलियन है तो उनका $22 बिलियन वो लोग इतना इन्वेस्ट किया उसके ऊपर सो इट इज ए मिशन क्रिटिकल जैसा मैंने आपको सैटेलाइट का बताया कि एक बार सैटेलाइट आपने लॉन्च किया फिर लॉन्च करने से क्या होता है फिर उसके बाद बिजनेस चालू होता है राइट ऑल कम्युनिकेशन चैनल्स वगैरह सो अगर आप उसका लाइफ 1 महीना बढ़ा के दिखाओ मतलब अनदर थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स का बिजनेस मिलेगा अदरवाइज फिर वो डेड हो जाएगा वो खाली घूमता रहेगा कम्युनिकेशन नहीं दैट्स व्हाई दिस आर ऑल मिशन क्रिटिकल और जो मैं आपको ये मोबाइल का वगैरह बताया था ये जो भी चल रहा है मार्केट में दीज आर ऑल कंज्यूमर सेक्टर में क्या है जो पहला रिलीज करेगा वही बॉस जो सैमसंग ने टच स्क्रीन रिलीज किया नोकिया बंद हो गया लाइक तो टाइम टू मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट और हेल्थ केयर सेक्टर में लाइफ क्रिटिकल ठीक है अभी भी हमें मालूम है कोविड पे जितना कोविड दवाई उस टाइम जो ड्रग्स ये लोग बनाया था उससे ज्यादा डेथ्स अभी हो रहा है तो इफ यू केयरफुली स्टडी द एनालिसिस कोविड के बाद मोर डेथ्स आर हैपनिंग दैट टाइम व्हाट डज इट मीन इट मीन्स वो जो ड्रग्स वो लोग बनाए थे
they have killed the COVID virus. That's okay, but they also damaged some organs of this thing. तो उसका side effects, heart attacks वगैरह वो सब अभी उसका ज़्यादा है. So these are the problems. That's why these are all life critical things. Have you understood what is digitization, what is computerization of the objects, and then what is constraints in applications? So whichever is the components, computational units, sensors, when you are choosing, you should have some criteria because your customer, who is your customer, accordingly you have to do the things. कुछ ethical practices होते हैं, ठीक है? For example, healthcare sector पे, मतलब अगर इमेजिन करो आपका प्रोडक्ट जो है फॉर पेशेंट्स के लिए, लेकिन वो प्रोडक्ट बनाते वक्त आपको पेशेंट्स का डेटा चाहिए, तब जाके आपका ये एल्गोरिदम चलेगा. बिना डेटाबेस का कोई एआई तो होता ही नहीं. लेकिन व्हेन यू आर डिस्क्लोजिंग ऑल पेशेंट्स के इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो, तो देन इट्स ए कॉन्फिडेंशियल मैटर ना. यू आर नॉट सपोज टू, डॉक्टर इज नॉट सपोज टू शेयर द इंफॉर्मेशन अदर्स एक दूसरे का. बट मैं एज ए इंजीनियर, मैं जब प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो बिना डेटाबेस के मेरा प्रोडक्ट कैसा बनेगा? सो आई नीड डेटाबेस. तो आप किसी डॉक्टर से आप ले रहे हो डेटाबेस, देयर आर सर्टेन एथिकल प्रैक्टिसेस यू हैव टू फॉलो दैट. सिमिलरली जैसा BRCT, ये जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स या डिफेंस, इस एरियाज पे अगर आप कोलैबोरेटिव एखादा प्रोजेक्ट कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? यू आर नॉट सपोज टू लीक द इंफॉर्मेशन. ठीक है, किसी से भी यू आर नॉट सपोज टू डिस्कस. सो दैट मीन्स यू आर सपोज टू साइन सम दीज थिंग्स. आप थोड़ा भी इंफॉर्मेशन आपने लीक किया while working, you are behind the bars. So it's like that. So that's why I said that every product has its own constraints. Like I told you, even applications also, like railways के लिए आप एक आधा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो ये चाइनीज का ऐसा कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स यूज किया, वो लोग अप्रूव ही नहीं करेंगे आपका प्रोडक्ट. ठीक है, बिकॉज दे हैव लिस्टेड कंपनीज. एनी प्रोडक्ट विच यू मैन्युफैक्चर फॉर डिफेंस, रेलवेज, ऐसा कुछ कंपनीज को, तो द माइक्रो कंट्रोलर विच यू आर चूजिंग, अगर उनका ही लिया तभी आपका एटलीस्ट आपको एंटरटेन करेंगे. अगर आप बोलेंगे मैं ESP32 यूज कर रहा हूँ, ऐसा गेट आउट. सिंपल. Like अभी already you know there is a cold war happening between China and America. So अभी NVIDIA को लोगों ने बोला ना, don't supply GPUs to China. But झटका किसको मिला? NVIDIA को मिला ना. NVIDIA is American कंपनी. सेम इसका चल रहा है अभी, एप्पल फोन का चल रहा है ना. जैसे ही वो लोग ने NVIDIA चिप्स बैन किया, तो चाइना ने उल्टा इनको बोला कि भाई nobody should buy Apple phone in China. बट एप्पल फोन का सबसे बड़ा कस्टमर चाइना है. 20% ऑफ द फोन्स आर सोल्ड इन चाइना. अब ये लोग इनके ऊपर है. It's like that. So that's a problem. That's why I'm keep on saying that understand your customer, and then उसके बाद आप सोचो कि भाई what is approved, what is not approved. Then only you have to choose the components. Is that clear? So when you look at their website, they will give you 3-4 options. Is your application is for consumer sector? Is this application is for a defense sector? Or is the application for a industrial sector? Like a space का भी हो सकता है, I don't know. But 3 तो definitely रहता है. So then you have to choose कि आपका who is your customer, accordingly you have to grade जो है. Component same है, behavior same है, but grade is not same. So you have to choose that accordingly. सबसे सस्ता कंज्यूमर का रहता है और सबसे महंगा डिफेंस का रहता है, मिलिट्री ग्रेड. It is your choice which component to be chosen. Should we take a break? 10 minutes. Okay. So then we will take a break for 10 minutes.
Guys, be seated. Be seated. जाओ मत कह रुको. हाँ वॉशरूम जा भाई. बैठो एक मिनट. हाँ वॉशरूम जाके आओ, जल्दी आओ. जाके आओ, जल्दी आओ. बैठ जाओ. सारे SPIT फर्स्ट ईयर्स वाला है ना? हाँ, आपको नहीं, आप कोई एक्सटर्नल कॉलेज? ठीक है. सो बेसिकली हमारे पास ना 4 रोल्स हैं. And for the other college students, there is one role which is campus ambassador. Fine. हमारे कॉलेज का कैंपस एम्बेसडर नहीं है कुछ. हमारे में 4 रोल हैं. Fine. पहले ये बताओ कि who all are really looking forward to go with the club. मतलब जो 5K पे करके then you have to go ahead. Who all are serious है? बता दे. रफ काउंट दो मुझे. मतलब रेज योर हैंड्स. तो सीरियसली पूछ रहा हूँ, सोच के फिर हाथ उठा. तो ओके, एक शीट पास करता हूँ. राइट योर नेम, योर क्लास. फाइन. और जो दूसरे कॉलेज वाले हैं 2 जन, आप लोग मीट के बाद एक बार मिल लेना. ठीक है. नाउ द थिंग इज वी हैव 4 रोल्स. फर्स्टली वी हैव लॉजिस्टिक्स. We have logistics, we have PR, we have material handling or finance. These are the basic things which volunteers का काम रहेगा. और एक जो PR वाली टीम रहेगी, they have to contact our alumni to take sessions as well as reach out, be contact with the students who are the part of this program. जैसे सर ने बताया कि जिनको कोरियर में देना है तो उनके साथ भी कांटेक्ट में रहना होगा कि हाउ दे आर डूइंग, उनको क्या रिक्वायरमेंट है, तो उनको कोरियर किया जाएगा. कोरियर कैसे हो रहा है, हो भी रहा है कि नहीं, दैट ट्रैक. फाइन. एक टीम होगा लॉजिस्टिक्स का जो कि जो भी नीडेड रिक्वायरमेंट्स हैं उसको लेके आएगा. अब वो कैसे लेके आएगा, क्या लेके आएगा, वो इन्फॉर्म किया जाएगा. वो लॉजिस्टिक्स का पार्ट है. That is the role of logistics. और फाइनेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग में कि कैसे जो भी चीजें आ रही हैं उसमें कितना पैसा लग रहा है एंड ऑल, वो चीज है. बट मेन काम रहेगा कि कोई भी सेशन है उससे पहले you have to make sure that the materials which are required for that session are already available in the lab. सबके लिए रेडी है सेटअप. लाइक तुम्हारा मल्टीमीटर हो गया, बेसिक चीजें जो है ना, वोल्टेज सोर्स हो गया. अगर कुछ और भी चाहिए, ब्रेड बोर्ड चाहिए तो वो. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड. तो ये सारी चीजें उधर होनी चाहिए. और अगर समझ लो ये वाला बोर्ड हम बना रहे हैं, ये रिले से, दिस इज रिले. तो ये बोर्ड ब्लैंक रहेगा फर्स्ट डे से. समझ लो ये रिले है, इसको हमने रखा है, मतलब ये चाहिए उस दिन के काम के लिए. तो हमें रिले को भी उसके साथ ही रखना होगा एट दैट प्लेस, ताकि जो लोग आए दे डोंट हैव एनी डिफिकल्टीज. ठीक है. एंड द सेशन वो सीरियसली. फाइन. समझ आया? तो अभी मुझे वो फॉर्म एक पेपर देता हूँ जो सही में कर सकते हैं, कीपिंग देयर, मतलब और भी कमिटीज तुमने ज्वाइन की होगी आई नो, और बाकी तुम्हारे एकेडमिक्स पे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए. ये ध्यान में रख के जो कर सकता है तो उसमें आगे में सिर्फ ये लिख दो कि वॉलंटियरिंग, बस दैट्स इट. नंबर भी लिख देना उसमें अपना. फाइन. और कौन से डोमेन में करना है वो बता दिया मैंने, वो देख लेना तुम लोग. उसमें लिख देना वॉलंटियरिंग, लॉजिस्टिक, वॉलंटियरिंग, पीआर एंड मटेरियल हैंडलिंग. फाइन. हाँ
प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हो ना, चैट हाँ वो that is not open for first year right now. तो सेकेंड ईयर के बाद इफ यू नो हाउ टू कोड, किसका तुम्हें पता है चैटबॉट कैसे बनाते हैं? Yeah, but if you have, हाँ, if you have, if then you we know can. that, then okay. इसीलिए पूछ रहा हूँ, you know how to But make it. अगर किसका डिस्कॉर्ड का वर्ड बना है? कौन सा वर्ड बना है? नहीं, वेब डेवलपमेंट रिएक्ट। Okay, so we will discuss about हाँ, that. if you know that, then most हाँ. welcome. बट वो वाला एक रोल मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि फर्स्ट ईयर में यूजुअली उतना नहीं आता। अगर किसी को आता है, फ्री, यू आर वेलकम, वेरी, आके बताओ, ठीक है? उस हिसाब से फिर वी विल गो फॉरवर्ड, ठीक है? और जिसको भी बाकी कोई भी रोल में है, वो लोग उस फॉर्म में लिख दो कि कौन से में वॉलंटियरिंग करना है, और जो सीरियस है वही लिखना। फिर अभी तुम बोलो कि हाँ करना है, बाद में जब मैं तुम्हें ग्रुप में ऐड करूँ तब बोलोगे कि नो आई एम नॉट अवेलेबल एंड ऑल। दिस इज अ सीरियस थिंग व्हिच इज गोइंग ऑन, तो तुम्हें भी समझ के लेना है, ठीक है? और द पर्सन्स हु आर, यू तेरना कॉलेज, राइट? एंड यू अथर्व कॉलेज, So you can act as ambassador. yes, ambassador, student ambassador. So you have to take care of your college students कि वहाँ के तुम्हें अपने फैकल्टी से अगर चाहिए तो we can also MOU किया है कुलकर्णी सर के साथ, was there few weeks back. Terna bhi, I know your principal. We will do that. So we can start a center there. so basically जो भी लैब के रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका रिक्वायरमेंट्स उधर बेसिक रिक्वायरमेंट हो, बाकी सब तुम्हारे पास हो गए। तो बस तुम्हें स्टूडेंट्स वहाँ के होने चाहिए, जो भी इंटरेस्टेड है सब वो होने चाहिए, और फिर ना बोले यू आल्सो, आई विल सेंड यू, तुम लोग के ऊपर है कि तुम्हें वो करना है कि नहीं, यू टेल मी। अगर करना है तो देन आई विल फॉरवर्ड यू सम मैसेजेस, जो कि तुम फॉरवर्ड कर सकते, एक फॉर्म रहेगा बेसिकली जो गूगल फॉर्म होता है, तो लोग जो इंटरेस्टेड रहेंगे उस हिसाब से करने के, और सेम प्रोसीजर सेम रहेगा। हाँ, वॉलंटियर, देखो वॉलंटियर होना इज नॉट इम्पोर्टेंट, वॉलंटियर बैकएंड का काम करेंगे और साथ साथ में सीखेंगे भी, ठीक है? और जो सिर्फ सीखना चाहता है, फॉर श्योर वो तो इन है ही भाई। सिर्फ बैकएंड, देखो कोई भी क्लब या कोई भी कम्युनिटी तभी काम करता है जब बैकएंड में भी कुछ काम होते हैं, ठीक है? जैसे सामान ला, क्या फाइन, मैं अभी दे देता हूँ, एक ब्लैंक शीट दे रहा हूँ, उसमें सब अपना नाम, नंबर, अगर वॉलंटियरिंग करना चाहते हो तो वो लिख दो, और कौन से डोमेन में, डोमेन 4 है, लॉजिस्टिक, हाँ नहीं बस नाम लिख दो, नंबर लिख दो, और वो हाँ अपना डिवीजन लिख देना, डिवीजन और कौन सा ब्रांच है प्लीज।
I will write down. कमेटी में फाइनेंस वाला बोल रहे थे अरे पहले फाइनेंस कमेटी कौन है सबको पेमेंट करना है क्या अभी पेमेंट करना है सर अच्छा अभी डिस्कस See, what we do is, I said, उसमें तो चिन्ह you have marker here. Marker है इधर. सर पेन उधर पास White board, हाँ? हाँ पेन उधर पास नहीं, white board marker व्हाइट नहीं. बोर्ड का मार्कर आई थिंक आई हैव टू टेक इट फ्रॉम द पूछो भाई. Actually, commitment is 5 o'clock. So, Right? मतलब क्या वो करना जो है? शीट इसके पास बाद हो क्या रही है करना है? उसमें सबको भरना है By 5 जो will wind up. इंटरेस्टेड है जो इंटरेस्टेड नहीं है बस Actually, I उसमें still आगे can't लिख do दो it. कि इंटरेस्टेड हाँ, you want to leave now. तो मैं एक अनाउंस कर देता हूँ, फिर then you can. अपने नाम के आगे इंटरेस्टेड लिख दो दैट्स इट हाँ आई लिखा दो पीछे बाकी और भरना सबको ही है वो अटेंडेंस शीट है फॉर द प्रोग्राम उसमें वॉलंटियरिंग का कॉलम भी है Okay, so the announcement is the theory definitely will happen every week. Either I will be taking or some volunteers who are experts, seniors, alumni, industry. Definitely will arrange some session. Every week, definitely one half day session, not full day session. Jada theory bhi it's boring. 3 hours definitely session will be there. But after that, there will be hands-on session. Okay. That hands-on session, we'll make it as a batches. So since you are all here, अगर कल करना है hands-on session, let me know how many people are again willing to come tomorrow for that choice. मार्कर इज विद एडमिशन ऑफिस बट दैट इज क्लोज ठीक है, so I will just orally will say. Okay. Why I need to make batches? For two reasons. One is whatever we do it, जो भी work हम कर रहे हैं, I should know कि कौन सा batch में कितना काम हो. सोल्डरिंग हो, टेस्टिंग हो या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एटलीस्ट वो फॉलो करना इजी रहता है. कभी एक आधा एग्जाम आ गया, कभी मिस हो गया, तो वी हैव टू कंप्लीट दैट. वी हैव टू बी एट पार. ऑल ऑफ देम शुड बी एट पार. दैट्स व्हाई वो आई थॉट कि एटलीस्ट देखते 30 स्टूडेंट्स, 30-35 स्टूडेंट्स का एक बैच बन सकता है. सो वी विल डू दैट. अगर समझो आपको लगता है वापस संडे आना इट्स अ पेनफुल है, और भी इफ यू हैव सम अदर वर्क, देन वीकडेज में फ्राइडे इवनिंग यू कम हियर. सो वी विल हैव ए हैंड्स ऑन सेशन ऑन फ्राइडे इवनिंग. और दोज हु आर रिमोटली अटेंडिंग द सेशन, उनके लिए सैटरडे का सेकंड हाफ जो है, व्हेन आई एम कंडक्टिंग फिजिकली, वो लोग ऑनलाइन भी थोड़ा विल सी सम कैमरास विल अरेंज. So whatever we do it, they can see it. So Friday evening will be 310. So Friday and Saturday it will be days.
No, that's what I'm saying. Sunday is only for batches. अगर समझो more than 30 है some, so then we'll make a batch. No? Like everybody we cannot accommodate in. So that's why I'm not sure how many are interested really in doing hands-on things. Abhi already we have reached 1,000 count in this group. But reality, I really don't know how many of you are serious. Okay, understood? Okay, so the payment, what you do is either you can, whatever the mode you want to pay, you can pay it. But then when you are paying, पहले मुझे WhatsApp करो कि भाई you are paying, so that I will enter your details somewhere in the Excel sheet कि you are paid. So through mobile, you can UPI से आप पे कर सकते हो. Same number 9820962870. आपको मालूम है ना, वही मेरा WhatsApp नंबर. हाँ, उससे कर सकते हो. बट आपको रिसिप्ट चाहिए तो बता दो, देन हम लोग को कंपनी के थ्रू उसका GST ऐड करके. बट जो दोस्त हु आर नॉट SPIT, जो रिमोटली है, सो व्हेन वी नीड कुरियर एड्रेस. हाँ, जी फॉर्म. All right. Okay, somebody wants to leave, I think. Kandiveli is left already. Oh, he is left. Okay, fine. Okay, so I will take another 1 hour, then we'll wind up the session. Understood? So far, our area of interest. See, when we do our system design, how many languages? I said 3 languages. One is embedded C, second is Python, what is called micro Python, and then we will see embedded Java. The 3 compilers we are planning to use in this environment to doing that. So that is as far as programming languages are concerned. Controllers, I said, at least to begin with, we all start with this hardware setup. EduRobo, we named as a EduRobo, which consists of some controller. But let us take the best controller, which has a lot of features with IoT inbuilt. So ESP32, let's use that. In future, if you want to exchange the microcontroller, I will give you that option. You return me back your CPU. I will give you a different controller. आपका ही board के ऊपर उसको plug in कर सकते. That we will do that. So don't worry that future पे आपको कुछ अलग CPU चाहिए तो we will do that. I will do that replacing concept. Huh? Any? See, I had given some features, right? How many sensors are there? How many motors are there? Like that, IoT. So you can different. Even उसके अंदर भी अभी latest design में what we have done, we have embedded even a relay also. मतलब आपका एक आधा 230 volts, एक आधा fan tube bulb ऐसा on off भी करना है, सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं. जो चीज आप कंप्यूटर से नहीं कर सकते हो वो सब हम कर सकते हैं. आपका कंप्यूटर से एक फैन ऑन करके दिखाओ, नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कर सकते हैं. That's what I am saying. That's the beauty of this subject. Okay, so let us look at the challenge issues, design issues. When we choose these platforms, the controllers, when we choose these compilers, there are some challenges. So that is why we should have some criteria. Let's see, in 1 hour, whatever is possible, I will discuss. Otherwise, maybe next week, we will discuss about the remaining theory part.
One of the criteria already said, it is a application which decides that, right, your design methodology, time to market means how quickly I can complete my design, and operating speed, right? Why do you choose a controller, right? It's also equally important that what is how much amount of time a program is taking for execution. Okay, so we want a better clock. Power consumption, which we already discussed several times, that choose a component where it is consuming less power, not the more power. And of course, now we are using silicon technology, but there may be a possibility that other kind of materials also used in the components, like sensors and all. And consumer market, and minimize the manufacturing cost, no chance for further modifications and so on. Okay, so when you are choosing the components, I said you get consumer sector also, industrial grade also, military grade also. So you have to look at your design challenges, right? To whom you are targeting, accordingly you have to choose the components. So grades are not same, cost is not same, and so on. So you have to choose them. Okay, it's a black box. So if you want to simplify the things, what you have is inputs, outputs, and a CPU. And it's a closed loop system. Why do you want closed loop system? What's the advantage of having a closed loop system? What is closed loop system? You don't have to continuously start and stop the system. Okay. Any other idea? What is closed loop system? Let's say, for example, you have a geyser in your bathroom, and when you switch on the geyser, you get sometimes hot water. If you switch on the same geyser in summer, you will get boiled water. The same geyser, if you switch it on in winter, not even warm water. Okay? Because your geyser is a open loop system. Okay. What is closed loop system? Closed loop system means, let's say, for example, your microwave oven. A microwave oven, you set the temperature. I'm I'm keeping inside the microwave oven some cake or something like that. You know what is the temperature to be maintained, and accordingly you set the value. And that fellow, what it will do, till that temperature is maintained, it will keep on adjusting its parameters. Okay, it's keep on adjusting. It's not that whatever you set is that. No, it measures it is achieved or not. If it is not achieved, then what should I do? That's why today we are talking about the smartness. Smartness means the way a human behaves. We want the devices to behave. That's what is the expectation. Smart means like a human. Okay. Let's say, for example, whatever is the feedback we have, some of the feedback, for example, I cannot see, I cannot hear, right? I cannot smell, I cannot touch. Some of the feedbacks I have lost. So then imagine what is the kind of situation about that machine. When a sensors, when the data, when the variables are less, when the feedback is less, then how the system behaves. Okay, like I gave an example of a geyser. There is no feedback. You switch it on, the factory has designed some heater, let's say 1000 watts. You switch it on, it will give 1000 watts. But what is the guarantee that the water is cold
or the water is extra hot, it could be anything, or the inflow is changing, is a less water is coming, more water is coming, pressure is changing. The fellow who stays in the ground floor, the pressure is high. The fellow who stays on the top floor is the pressure is low. Flow rate is changing. So many parameters are changing. When so many parameters are changing, how do you expect the system to perform the same thing? It won't. So that's why there is a difference between a open loop system and a closed loop system. A closed loop system continuously sends the output. It keep on measuring. You have a desired value, you have a measured value, and then it will subtract. What is that you want? For example, this room temperature, I want to maintain 25 degrees. You switch it on, but then the room temperature is not 25. It is either more or less. People are coming, going, some leakages are there, whatever. Several things may affect. Or the outside temperature is already below 20 degrees and you want inside 25. Or the other way around, outside is already 35. You want 25 to be maintained, and so many challenges. So it is not possible. So that means I should keep on changing my algorithm. My control signal, I have to keep on changing. That's why when we say smart, what do you mean by smart? Smart means there are sensors in it. Smartness comes because of the sensors in it. There is a feedback. Okay. If you have more variables, you are more smart. Okay. Let's take a washing machine. You will get washing machine 5,000 rupees also. You get washing machine 50,000 rupees also. But in 5,000 rupees, what you have to do? You only has to change the cloths or everything. You only has to do that. But in an expensive washing machine, what it does, it will give you options that your clothes are more dirty, or your clothes is a cotton, is a terry cotton. Whatever, it will ask you 4 or 5 questions. You said that, okay, you take this output. That is because it is changing its logic. Oh, today your clothes are having so dirty, some oil, this thing, that thing is there. So now I'm changing my strategy. Even more smart means don't ask any questions. Put your clothes, I will give the output. I'm not asking you what fabric is there, how dirtiness is there. आपने निर्मा यूज किया क्या या एरियल यूज किया, गर्म पानी यूज किया, ठंडा पानी. आई एम नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन. आपका कपड़ा डालो, क्या चाहिए आपको? 100% वाइट ले लो. हाउ इट इज पॉसिबल? बताओ क्या करोगे आप? सेंस. पहले आप कपड़ा डाला, कौन सा कपड़ा है? सेंस. कितना गंदा है? सेंस. कौन सा डिटर्जेंट है? सेंस. पानी कितना गर्मी है? सेंस. और पानी भी कितना गंदा है? सेंस. ठीक है, अभी सब मिल गया. अभी मैं फैक्ट्री प्रोग्राम नहीं है. दैट्स व्हाट इज मशीन लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स. मतलब अभी मैं एक मेथड अप्लाई करूंगा, कपड़ा धोऊंगा, वाइट हुआ नहीं हुआ, कुछ तो गड़बड़ है. लर्न, अप्लाई, हुआ नहीं हुआ, चलो आज सक्सेस हुआ, तो वो सक्सेस को स्टोर करो. नेक्स्ट डे वापस अपने कपड़ा ला, अरे ये कल का आज का यही है, फिर वापस मैं जीरो से स्टार्ट नहीं करूंगा, ये सक्सेस है, अप्लाई करो, ले लो. A machine is evolving, learning. Can you do that? We can do that. When it is possible, when you have more sensors, more variables, and a smart algorithm to connect the dots, it is intelligent. Okay, is that understood? What do you mean by closed loop system, and then what do you mean by smartness? And particularly, the smartness depends on the A, sensors in it, B, algorithm in it. Have you understood, all of you, what do you mean by smartness? How we can bring a smart into the system? Okay, now about what do you mean by real time?
Okay, this is another challenge, that except computer, most of the our day-to-day systems are real time in nature. Okay, except computer, most of the devices are real time in nature. What do you mean by real time? Real time means natural time, जस्ट नेचुरल टाइम. अभी 4 o'clock. अभी आपका 4:20 को ट्रेन छूटने वाला है, तो 4:20 को ट्रेन छूटने वाला है. लाइक दैट, एज सिंपल एज दैट. आपका फ्लाइट सो एंड सो टाइम है, 1 मिनट भी आप लेट हो गए, वो चलो जाएगा, यू हैव मिस्ड नथिंग. सो नेचुरल टाइम. व्हाट डू यू मीन बाय नॉन रियल टाइम? अब 4 o'clock ट्रेन है, आप 3 बजे जाके बैठ जाओगे उधर साथ, या 4 o'clock ट्रेन है, आप 4:10 को जाके बैठ जाओगे, तो क्या करूं मैं उसको? आप पहले जाके भी कुछ फायदा नहीं, बाद में जाके भी कुछ फायदा नहीं, आप तो इन टाइम तो नहीं आप. अंडरस्टूड? मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पीड, मैं कितना फास्ट जा सकता हूं या कितना स्लो जा सकता हूं, मैं वो नहीं. टाइम पे गया, टाइम पे किया काम, देन यू आर रियल टाइम. टाइम पे अगर अचीव नहीं किया, you are a non-real time system. Understood? So today whatever I am saying, every day AE points के ऊपर आप सोचते रहो, whatever is the products you see in your day-to-day life. ठीक है? Morning also I told you some, what is computer versus non-computer, right? What is internet-enabled systems? Like that I told you so many things. Operating system, and other than IBM, Microsoft, Intel, what are the other things you see, and so on. Now what I am saying, real time versus non-real time. Tell me, what is non-real time? आपको ऐसा क्यों लगता है यार ये नॉन रियल टाइम, ये टाइम फॉलो नहीं कर रहा है? ये कोई आपको डे टू डे लाइफ में ऐसा कुछ प्रोडक्ट आपने देखा जो टाइम फॉलो नहीं करता? मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कंप्यूटर इज ए नॉन रियल टाइम. चलो जस्टिफिकेशन तो बोलो कि कंप्यूटर इज नॉन रियल टाइम क्यों है, और एनी अदर प्रोडक्ट आपको लगता है यार ये नॉन रियल टाइम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका कार पे आप ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हो, वो रियल टाइम है नॉन रियल टाइम? रियल टाइम है ना. नॉन रियल टाइम का मतलब क्या है? आप ब्रेक अप्लाई किया लेकिन वो जाके ठोक दिया उसने, या आप ब्रेक अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट उधर है लेकिन इधर ही रोका है उसने, वो भी नहीं चाहिए. जहां अप्लाई किया उधर रुकना चाहिए, दैट इज रियल टाइम. आपका लिफ्ट रियल टाइम है नॉन रियल टाइम है? व्हाट डू यू मीन नॉन रियल टाइम? कभी फास्ट दौड़ता है, कभी स्लो दौड़ता है, कभी डोर आपको मारता है, ऐसा ये नॉन रियल टाइम. रियल टाइम मीन्स हर रोज 365 डेज 24/7 वो वैसे ही काम करता है, दैट इज रियल टाइम. ठीक है, आपका लोकल ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, ये सब रियल टाइम है. ऐसा कभी नहीं होता है कि भाई कभी नो फास्ट दौड़ रहा है, कभी स्लो दौड़ रहा है, ये कभी नहीं होता है. एग्जैक्टली फॉलोज द डेडलाइंस. आपका एयर कंडीशनर रियल टाइम है नॉन रियल टाइम है? रियल टाइम, क्योंकि आप जो भी टेम्परेचर सेट किया वो कोशिश करता है कि भाई मेंटेन करो टेम्परेचर. इट्स डूइंग इट्स जॉब इन टाइम. So like that, in your life, most of the products are real time in nature. आपका टेलीविजन, सेट टॉप बॉक्सेस, मोबाइल्स, all products are real time. What is non-real time? Generally, non-real time very rare है, but definitely I say computer is a non-real time. A surprising thing है, but generally people don't think of कि why computer is a non-real time. जबकि कंप्यूटर इज वर्किंग ऑन 4 गीगाहर्ट्ज स्पीड पे चल रहा है. ठीक है, कंप्यूटर इज वर्किंग ऑन 4 गीगाहर्ट्ज, मल्टी कोर सीपीयू, 16 टेराबाइट्स, फिर भी गीगाबाइट्स, फिर भी कंप्यूटर इज नॉन रियल टाइम. जबकि आपका आपका एसी वगैरह जो है वो 8 बिट सीपीयू है, मुश्किल से 10 मेगाहर्ट्ज पे चल रहा है, फ्यू किलोबाइट्स मेमोरी है, फिर भी वो रियल टाइम. सो इट इज इंटरेस्टिंग why computer is a non-real time system. अच्छा ठीक है, कंप्यूटर क्यों नॉन रियल टाइम? Why I am saying computer is non-real time?
सम एक्सटेंड आपका मोबाइल भी नॉन रियल टाइम है, बट ठीक है, वो देखते हैं. Sir, like कोई चीज तो हमेशा सेम टाइम में नहीं आएगा, लाइक किसी वक्त 1 सेकंड लगेगा, किसी वक्त आधे सेकंड. नहीं, वो इट इज बिकॉज आपके इंटरनेट का बैंडविड्थ का वजह से. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर कल्प्रिट नहीं होता, वो इनपुट ही वो नहीं है ना उसका. तो क्या, प्रोग्रामिंग में भी कभी 2 सेकंड में रिजल्ट आता है, कभी very good, that's the answer. See, when you are writing the programs in your computer, same program हर रोज सेम टाइम लेता है कि एग्जीक्यूशन के लिए? नहीं. कभी फास्ट एग्जीक्यूट होता है, कभी स्लो एग्जीक्यूट होता है, और जिस दिन नया खरीदा है उस दिन बहुत फास्ट चलता है. धीरे 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 6 महीने के बाद आजकल मैंने सुना है कि एप्पल फोन भी स्लो होने लगे, ऐसे लोग बोलते हैं. डोंट. तो सो आपका डिग्रेड हो रहा है, जबकि सेम हार्डवेयर, सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, एवरीथिंग इज सेम, बट एप्लीकेशन प्रोग्राम इज रनिंग एट डिफरेंट टाइम्स विद डिफरेंट स्पीड. गलत है ना फिर, ये तो नॉन रियल टाइम है. हाउ इट इज पॉसिबल कि कभी फास्ट कभी स्लो? ये नहीं चलेगा ना. आपका लिफ्ट ऐसा चलेगा क्या? आपका कार ऐसा चलेगा क्या? आपका वो एयर बैग्स ऐसा चलेगा क्या? नहीं चल सकता है. बट कंप्यूटर पे ऐसे ही चलता है. ओके, नाउ व्हाट इज द रीजन? कभी फास्ट कभी स्लो क्यों है कंप्यूटर पे आपका प्रोग्राम्स? ओल्ड न्यू, पुराना टाइम लगता है. हाँ, व्हाई टाइम इज डिफरिंग? हु इज द कल्प्रिट? कंपाइल कर सिलिकॉन पार्टनर बार हार्डवेयर सेम है बाबा, हार्डवेयर इज नॉट डिग्रेडिंग. फिर अगर उसमें हार्डवेयर डिग्रेड होता है तो फिर इसमें भी होना चाहिए, आपका कार में भी होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए. सीपीयू. हाँ, सॉफ्टवेयर की अपग्रेड हार्डवेयर. सी योर ऑपरेटिंग सिस्टम वही है, आपका एप्लीकेशन प्रो कंपाइलर वही है, आपका हार्डवेयर भी वही है, और यहाँ भी वही है. सब जगह वही है ना. ऐसा कोई नहीं कि कंप्यूटर का सीपीयू अलग है इधर से. सभी वही सिलिकॉन है, सब कुछ सेम है. ओनली कल्प्रिट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, और कोई रीजन नहीं है. ये आप माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो, इसीलिए कंप्यूटर इज ए नॉन रियल टाइम सिस्टम. अगर उसको फेंक दो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को और खुद अपना ऑपरेट, मैं आपको मॉर्निंग स्लाइड में क्या बताया था, हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिखते हैं? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. वी राइट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. सो यहां भी आपका कंप्यूटर को, इफ यू वांट टू यूज योर कंप्यूटर मिसाइल लॉन्चिंग के लिए, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स में, बुलेट ट्रेन्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं, यूज करो. हाउएवर विदाउट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, देन इट इज रियल टाइम. सॉरी, नो, लिनक्स इज आल्सो नॉन रियल टाइम. हाउएवर एक एडवांटेज है लिनक्स में. Why I am saying? Because Microsoft operating system you cannot modify, because they don't give you source files. That's why you cannot modify it. However, though Linux is a non-real-time system, however, you can modify the Linux, because when you install the Linux, they provide you the source files. तो आप उस कर्नल को रियल टाइम पे मॉडिफाई कर सकते हो. ये भी आप फाइनल ईयर में यू कैन टेक दिस प्रोजेक्ट्स. Can I make my computer as a real-time operating system? There is something called RT Linux, not normal Linux, or real-time Linux. So you can make your computer as a real-time Linux. You can do that because Linux provides you the source files. But however, Microsoft Microsoft provides you only binary files, installable files, not the original files. What in by source file? अगर वो माइक्रोसॉफ्ट की जगह आपका नाम डिस्प्ले करके दिखाओ, दैट मीन्स यू हैव सोर्स फाइल्स. बट आपको जिंदगी भर माइक्रोसॉफ्ट ही डिस्प्ले कर रहे हैं, मतलब यू कैन नॉट मॉडिफाई. दैट मीन्स इट इज सेफ. और देयर इज अनदर स्टोरी. व्हाई वायरस अफेक्ट्स ओनली विंडोज, व्हाई नॉट लिनक्स? आपने देखा ना, कोई एंटीवायरस लिनक्स में नहीं डालते, खाली विंडोज में ही डालते. हाँ?
the pre-media bit जो developers से websites अरे आपने इतना 1,000 करोड़ का उसने इन्वेस्ट किया, आपको 20-20, 30-30 लाख पगार दे रहा है, फिर वल्नरेबल बोला तो कैसा चलेगा? यू इट्स योर ड्रीम ना माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करने का, फिर यू शुड मेक इट like antivirus benefits. okay. It's an interesting thing. I may be completely wrong. I'm just only as a take it sportively. What I am saying is, वो एक फिल्म में भी है ना, देयर इज ए चोर को चोरी करने के लिए चैलेंज चाहिए रहता है, ठीक है? वो इसका भी कुछ फिल्म्स है ना, वो कौन सा धूम वगैरह, हैव यू सीन धूम सीरीज 1 2 3 समथिंग लाइक दैट? सो मुझे चैलेंज चाहिए नो, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम फ्रॉम सो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, मुझे हैक करना है, मुझे ब्रेक करना है, तो मुझे चैलेंज चाहिए। चैलेंज कौन देता है? जो जिस कंपनी अपने आप को वर्ल्ड का बेस्ट क्लेम करता है, चलो इसको ब्रेक करके दिखाता हूँ। सो पूरा दुनिया में ये जो कोडर्स जो है, उनके लिए बेस्ट चैलेंज क्या है? जो कंपनी क्लेम करता है आई एम द बेस्ट, चलो उसको ही तोड़ के दिखाता हूँ मैं। ये एप्पल मुझे समझ में नहीं आता है, वो छोड़ दो, हम लोग यूज ही नहीं करते, वो खाली यूरोपियंस अमेरिकन यूज करते हैं, इंडिया में कौन एप्पल यूज करता है? ठीक है, लेकिन मैंने 30 इयर्स में एप्पल यूज ही नहीं किया, वो हमारे लिए अभी भी वो उसको क्या बोलते हैं, एंटिक पीस है हमारा, ठीक है? सो दैट्स व्हाई जो क्लेम करता है ना आई एम द बेस्ट सिक्योरिटी, तो नेचुरली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स जो अपना टॉपर्स जो है वो हमेशा उसको ही टास्क में लेते हैं जो चैलेंज है ना। दैट्स व्हाई ऑलवेज स्टूडेंट कम्युनिटी, ऐसा मैंने सुना है, बट दे टेक इट दैट एज अ चैलेंज, क्योंकि अच्छा केस स्टडी चाहिए ना, ठीक है? दैट्स मे बी द वन रीजन व्हाई एंटायर वर्ल्ड इज वांट्स टू क्रैक द बेस्ट क्लेमर्स नो दिस। सेकंड रीजन जो है, एंटायर वर्ल्ड में माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम सेम है, ठीक है? मैंने यहां बेचा, वहां बेचा, वहां बेचा, वर्जन तो सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल एंटायर वर्ल्ड में ह्यूमंस का डीएनए सेम ही है, तो अगर कोविड यहां अटैक किया तो वो चाइना में भी अटैक करेगा, यूएस में, सब जगह वही कोविड, वही ह्यूमन डीएनए सेम है ना। सो अगर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम सेम है, मेरा वर्जन सेम है, मेरा स्ट्रक्चर सेम है, मैंने एक को अटैक किया, एक को क्रैक किया, वो पूरा वर्ल्ड में फैल जाता है वो वायरस, बिकॉज सबका सेम ही है। अंडरस्टूड? सो व्हेन इट इज एवरीथिंग इज सेम, दैट मीन्स इट कैन अटैक, इट कैन अटैच एनीवेयर इन द वर्ल्ड। नहीं, अदर वे अराउंड देखते हैं लिनक्स में। अब लिनक्स जो है, व्हाट आई हैव प्रोवाइडेड टू यू, ठीक है, आपने उसको मॉडिफाई कर लिया, इसने अपना हिसाब से किया, इसने अपना हिसाब से किया, एवरी आई मीन इट्स नॉट द सेम, नो, यू कैन मॉडिफाई इट, यू कैन ऐड योर ओन पैचेस, रिकॉन्फिगर इट, कर्नल में भी थोड़ा RTLN ऐसा कुछ कर सकते हो, व्हाटएवर। सो व्हेन यू आर एबल टू रीडू द थिंग्स, दैट मीन्स इट इज नॉट सेम, नंबर 1। नंबर 2, वो खुद ही ओपन सोर्स है, फिर उसमें चैलेंज क्या है अटैक करने के लिए? किसको मजा आएगा? अंडरस्टूड? अभी जैसा लोग कहते हैं शनि शंगनपुर है, बस उधर विंडोज नहीं रहता है नो, ऐसा किसी का भी घर में विंडोज नहीं रहता है, दरवाजा लॉक नहीं करते, कोई चोरी नहीं होता है, ऐसा। व्हाई पीपल क्लेम दैट? फिर वो शनि शंगनपुर कैसा होगा अगर विंडोज रखा तो? तुमको शनि लग जाएगा। सो लोग डरते हैं नो, नहीं करते। So when Linux is open source, पूरा फाइल्स दिया, क्या दिया, फिर उसमें अटैक क्या करने का, उसमें तो वही भी open source, whatever. So it's interesting that kernel is non-real time,
However, it is not allowing you to modify the priorities of the task, इसलिए Windows is a non-real time. तो फिर क्या हो रहा है, आपको हर रोज आप नया नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, नया नया एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे हो. माई कंप्यूटर इज नॉट सेम एवरी डे. और जो रजिस्ट्री में वो अपना अपना वो फुटप्रिंट्स वो डालते जा रहे हैं. फिर एक दिन ऐसा आ रहा है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम को लीस्ट प्रायोरिटी है, वो वायरस समका तमका को हाईएस्ट प्रायोरिटी. अंडरस्टूड? जिसका कंप्यूटर है, जिसका ओनर है, जिसका प्रोग्राम है, वो खड्डे में गया और दुनिया भर का कचरा वो सब हाईएस्ट प्रायोरिटी पे मेरे ही कंप्यूटर पे रन हो रहा है और मैं देखते ही बैठ रहा हूं, क्योंकि मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता हूं कर्नल का प्रायोरिटी. अंडरस्टूड? लेकिन वही कर्नल मैं खुद मॉडिफाई कर सकता हूं, प्रायोरिटी मैं सेट कर सकता हूं, तो मैं खुद डिसाइड करूंगा ये सब जीरो प्रायोरिटी रन ऐसा लोअर. मेरा ये टास्क लिख रहा हूं, हर रोज ये हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रन होना चाहिए, तो होगा ये 100%. दैट इज कॉल्ड मीटिंग द डेडलाइंस और रियल टाइम करना. ये हमको करने को आना चाहिए, लेकिन विंडोज पे नहीं होता है, लिनक्स में भी नहीं हो सकता है, बट लिनक्स को मॉडिफाई कर सकते हैं बिकॉज इट इज ओपन सोर्स. अंडरस्टूड व्हाट इज द रियल टाइमनेस? सो मीटिंग द डेडलाइंस. मीटिंग द डेडलाइंस मीन्स अगर मैं कहता हूं कि मेरा ये फर्स्ट सैंपल है, मेरा एट n+1 के बाद नेक्स्ट सैंपल आने वाला है, और नेक्स्ट सैंपल आने से पहले पहले मेरा सब काम होना चाहिए और मैं रेडी रहना चाहिए नेक्स्ट सैंपल के. अगर मैं कंप्लीट नहीं किया, नेक्स्ट सैंपल आ गया, मैं कंप्लीट नहीं किया, तो सैंपल मिस हो जाए, मतलब आपका फ्लाइट चला गया. या आप कोई मिसाइल गाइडेड सिस्टम आपने बनाया और आपने वो मिसाइल को डिटेक्ट किया, लेकिन एंटी मिसाइल को नहीं छोड़ा, तो आपको नहीं छोड़े. तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ मिसिंग एन इवेंट इन रियल टाइम सिस्टम. यू हैव टू मीट द डेडलाइंस. वो टाइम के अंदर अंदर काम होना चाहिए, एक सैंपल भी मिस नहीं होना चाहिए. वो कौन सा सैंपल मिस नहीं होना चाहिए? जैसा बुलेट्स, सॉरी, जैसा मिसाइल्स या बुलेट ट्रेन्स, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम्स, और all these are all missing an event is called a catastrophic. मतलब न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स लीक हो गया और वो गेट्स बंद नहीं हुआ, फिर पूरा फैल जाएगा. So there is no question of missing an event, but उसमें भी there is a spectrum. रियल टाइम में भी कुछ स्पेक्ट्रम है. एक जो है, लाइक आई सेड, कंप्यूटर सिमुलेशंस आर 100% नॉन रियल टाइम, बट उसमें भी थोड़ा सॉफ्ट रियल टाइम है, हार्ड रियल टाइम. व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्ट रियल टाइम? मतलब थोड़ा चलता है, कभी कभी मिस हो गया तो चलता है, एक आधा मिस हो गया कोई बात नहीं, कोई मर नहीं जाएगा. ऐसा कौन सा सिस्टम्स है जो कभी कभी मिस हो गया तो चलता है? एनी एग्जांपल्स? एक आधा ओके, आज एक मिस हो गया कोई बात नहीं, वैसे भी अटेंडेंस में हम 25% दिया, एक आधा मिस. 100% नहीं हो सकता, इसलिए हम 25 दिया. अरे मैं ब्रेक्स का बात कर रहा हूँ. एक दिन आपको 365 डेज ब्रेक चला, एक दिन ब्रेक लगाया नहीं लगा, चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना उधर. लेकिन मैं बोल रहा हूँ ऐसा सिस्टम है, आपके हार्ट के अंदर पेस मेकर है, एक दिन चलेगा सब वो नहीं चलता है ना. लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ ऐसा कुछ प्रोडक्ट है, एक आधा मिस हो गया तो चलता है. कौन सा? वेरी गुड. जो आपका ऑडियो वीडियो सिस्टम्स जो है, ठीक है, ऑडियो वीडियो, जैसा आप पिक्चर देख रहे हो, सैटेलाइट से डाउनलोड कर रहे हो, डेटा सेंटर से आप पिक्चर देख रहे हो, बीच में एक आधा फ्रेम मिस हो गया, वो जो भी है रीजन है, आपको फर्क पड़ेगा क्या? आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि पर सेकंड 25 फ्रेम्स आना चाहिए, एक फ्रेम नहीं हो पाया, वॉट एवर, ठीक है ना. आपको आई को पता नहीं चलेगा, या पता भी चलेगा तो ऐसा छोटा सा ग्लिच आके चला गया, इट्स ओके ना, आप मर नहीं जाओगे. सो जो भी ऑडियो वीडियो म्यूजिकल सिस्टम्स, ये सब पे
It's okay, kabhi kabhi it can miss, no problem. That is called वो रियल टाइम ही है. उसमें नॉन रियल टाइम मीन्स व्हाट, यू नो? ऑडियो वीडियो में नॉन रियल टाइम मीन्स व्हाट? वेरी गुड. जब आप इंटरनेट कॉल करते हो, कभी ऑडियो पहले वीडियो बाद में, वो बोल रहे हैं, मैं बोलने के बाद समथिंग. और एक एग्जांपल है, लाइक बहुत बड़ा ग्राउंड है और दूर से कोई क्रिकेट खेल रहा है, तो उसने बॉल को पहले मारा. हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है, आप ये जो पिक्चर्स व्हेन वी सी समथिंग, इट्स नॉट मैचिंग. ऑडियो वीडियो का स्पीड मैच नहीं हो रहा है बिकॉज इट हैज लॉस्ट सम इंफॉर्मेशन, अनएबल टू कंप्यूट इट. सो T+1 का अंदर अंदर वो हो नहीं पाया, मिस हो गया. बट इट्स ओके, एक आधा चलता है, बट नॉट इन दिस ब्रेक्स और सेफ्टी या हेल्थ केयर, उस पर नहीं कर सकते. इसे लाइफ एंड डेथ. सो देयर यू कैन नॉट मिस द इवेंट्स. Okay, I think बहुत थक गए. एक लास्ट स्लाइड. Okay, this is what I expect the software development. It's a really interesting slide. आपको ये पूरा कोर्स वर्क में टिल दिस 1 year इसी स्लाइड के ऊपर आप सॉफ्टवेयर डेवलप करो. Then I understand that you understood what do you mean by real-time software development or industrial coding और राइटिंग ए ऑपरेटिंग सिस्टम. पूरा इसी तीनों चीज जो है इस स्लाइड में छुपे हुए. पूरा कहानी 3 चीजें छुपे हुए इसमें: इंडस्ट्रियल कोडिंग, रियल टाइम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और राइटिंग ए ऑपरेटिंग सिस्टम. 3 चीज इस स्लाइड को आप अच्छी तरह से सोचो. 3 चीज आप ये सेटिस्फाई कर सकते. Single board computer software development means this. ठीक है, क्योंकि you are all students, every day you are using some compiler, C++, which you must be using. आपको आपका फैकल्टी ने कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स बोलते हैं, राइट दिस प्रोग्राम दैट प्रोग्राम वगैरह. आप कितना भी लिखो, कुछ भी लिखो, बट ये स्लाइड आपको सामने बैठ के रखो, यार मैं जो प्रोग्राम लिख रहा हूँ ये इस फॉर्म पे है क्या? डेफिनेटली नो. सो जिस दिन आप प्रोग्राम लिखोगे और वो इस फॉर्म पे रहेगा, देन आई विल से यू हैव डेवलप्ड ए रियल टाइम सॉफ्टवेयर, अरे मुंबई you have coded industrial coding and you have also written a operating system. ठीक है, you satisfy this. Then तो इसमें 3 राज है इसके अंदर. तो नहीं ना जियोल ड्राइव कोनी बा जाग सिल्वर क्विकली, जियोल ड्राइव इट्स टू अर्ली बट क्विकली. आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? ये ऐसा क्यों है, अलग से लग रहा है आपको? अभी भी आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखने वाले हैं, ये लिखते हो, जियोल ड्राइव ये अलग क्या लग रहा है आपको इस स्लाइड को देखने के बाद? ओके, number of tasks multi-program. or time does it. It could be time. So events जो task करना है, जैसे कुछ करना होगा तो उसके लिए टाइम 30 minutes. यहाँ पे टाइमर दिया हुआ है. बहुत कुछ है ना, लॉट ऑफ थिंग्स टू ऑब्जर्व. ओके, यू आर ऑल करेक्ट, बट लेकिन मैं बोल रहा हूं ऐसा प्रोग्राम लिख के बताओ. आप कुछ भी लिखो, अभी भी आप कंप्यूटर में ही लिखो, इस पे लिखने का जरूरत नहीं इमीडिएटली. जो आप डे टू डे लाइफ जो यूज कर रहे हो, C++, जावा, पाइथन, जो भी है, लेकिन इस फॉर्म पे मुझे लिख के बताओ एक बार फर्स्ट, बिकॉज यू ऑलरेडी यूजिंग नो कंप्यूटर, आप हर रोज यूज कर रहे हो, तो उसी पे लिख के बताओ. बट ऐसे ही रहना चाहिए. क्या रहना चाहिए? आपने जैसा बताया, somebody said उसमें इंटरप्ट्स यूज करके बताओ, somebody said टास्क बना के बताओ, somebody said टाइमर्स यूज करके बताओ, somebody said प्रायोरिटाइज करके बताओ. इतना पॉइंट्स एक प्रोग्राम में आप इंप्लीमेंट करके दिखाओ, नॉट इन दिस बोर्ड, जो कंप्यूटर में पहले करके दिखाओ, देन आपका लाइफ आसान हो जाएगा यहाँ करते हो, क्योंकि यहाँ करना इतना सिंपल नहीं है. इसलिए आई एम रिक्वायर्ड फॉर यू टू टीच यू. I am openly saying I am the best trainer for this kind of things. I am openly claiming.
because I'm a corporate trainer. I trained Siemens people. I trained L&T people. I have trained several industrial customers. Hundreds and thousands of systems we have designed. I coded. I trained so many companies. Okay. So that is why my wish is that you should be a very good coder. Very good coder. Not only for computers, but for industrial coding. Not only knowing about the syntax तो वो तो I told you ना आपको BSc BCom में भी पढ़ाया जाता है syntax of a company. उसके लिए 4 साल का क्या जरूरत है 3 months कोर्स भी आना पड़ता. But understanding the application, जैसे मैं सुबह से 6 घंटे से आपको पढ़ा, understanding the application, understanding the constraints, understanding the application specific things, and then code a real-time software, not a non-real-time software developed industry, and that should have a operating system. So now finally, what is operating system? इस चीज में आपको ऐसा क्या लग रहा है कि यार इसमें operating system? Okay, that's good. What is operating system here? The heart of the operating system or kernel is nothing but managing the resources. कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल का मेजर रोल क्या होता है? टू मैनेज द रिसोर्सेस. जो भी गिवन रिसोर्सेस है, लाइक ही सेड, टास्क मैनेजमेंट. माय एंटायर प्रोग्राम इज नॉट इन वन सिंगल लूप. ये देखो, अब जनरली आप हर रोज क्या लिखते हो? मेन एंड, एक ही लूप में लिखते हो सब कुछ. बट दैट्स ए नॉन रियल टाइम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. रियल टाइम मीन्स मैंने प्रोग्राम को देखो कितना टुकड़े किए, एक टास्क. बट अब फिर वो बोलो ये तो फंक्शंस हो गया, ये तो फंक्शंस लिखा ना, ऑल फंक्शंस को प्रोग्राम को मैं कॉल किया, इट्स वन एंड द सेम. नो, देन देयर इज ए प्रायोरिटी, देन देयर इज ए टाइमर. देन वो देख रहा है कि नो, यू आर द हाईएस्ट प्रायोरिटी, यू आर द लोएस्ट प्रायोरिटी, यू हैव ए डेडलाइन, आई नीड टू मीट द डेडलाइन, एंड सो ऑन. And these things are keep on changing situation to situation. No, I will tell you what is end here. End means yahan there are two things. Programs are terminated, but in what way they are terminated? One is something called foreground loop, and there is something called background loop. आपको सामने से लग रहा है यार मेरा फोरग्राउंड में इज टर्मिनेटेड, एंड हो गया, बट नो, इट इज नॉट एंडेड. वो खाली सो रहा है, वो स्लीपिंग मोड पे. लेकिन अभी वो डेडलाइन आ गया, फिर वो जाग जाएगा, चलो वो काम करो, फिर कम बैक, चलो सो जाओ. नो, अभी प्रायोरिटी आ गया, चलो जाग जाओ कंप्लीट करो, आ जाओ सो जाओ. अभी आप क्या करते हो? हर चीज ऐसे ही है ना. सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अरे लास्ट का क्या होगा? उसका डेडलाइन है अभी. नहीं, मैं फर्स्ट का काम कर रहा हूं, तब इसका काम को मैं नहीं कर सकता, मेरा पहला ये करना है. So there is a something called I have a slide for this, called sequential programming versus concurrent programming. So ये आपको समझ में आना चाहिए. जो जनरली आप डे टू डे लाइफ में करते हो, that is called sequential processing. Sequential processing means 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो ऐसे ही कर रहा है. जब वो कर रहा है तो प्रायोरिटीज इसमें कहाँ है, डेडलाइंस कहाँ है, कुछ नहीं है, तो वो ऐसे ही फॉलो कर रहा है. कॉन्करेंट में मतलब कैसा है कि भाई आई हैव प्रायोरिटीज, आई हैव डेडलाइन, ये भी चल रहा है. जैसा कंप्यूटर पे आपको कैसा लगता है, तो माउस भी चल रहा है, कीबोर्ड भी चल रहा है, डिस्प्ले भी चल रहा है, म्यूजिक भी चल रहा है, इंटरनेट भी चल रहा है, लेकिन इतना सीपीयू तो है नहीं. सीपीयू तो एक ही है, पर इतने सारे टास्क कैसे हो रहे, कैसा हो रहा है? आई एम गिविंग ए फीलिंग टू यू. रियलिटी में एक ही सीपीयू है, बट यू आर फीलिंग एज इफ
इसका भी चल रहा है, इसका भी चल रहा है. That is called I am switching the tasks. Context switching with the priorities, with the deadlines. तो ये करने को आना चाहिए. That is called operating system. Can you write your own operating system? That's the interesting thing, where I want all you, whatever you do it, to reach to a level where, क्योंकि operating system scheduler is not one, उसमें भी types है, ठीक है, वो which is important for you, वो भी एक interesting subject Indeed, is there any real-time software? है ना. अदरवाइज ये सारे प्रोडक्ट्स कैसे चल रहे हैं ना, आपका 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स लिफ्ट, ये सभी में कुछ ना कुछ तो शेड्यूलर है, बट इट इज रिटन बाय डेवलपर. देयर इज नथिंग लाइक रेडीमेड खरीद के इसमें लोड किया, वो खाली कंप्यूटर में होता है, इधर नहीं होता. Computer हाँ में ऐसा कुछ real-time में computer नहीं ना, कंप्यूटर में ऑलवेज माइक्रोसॉफ्ट और लिनक्स, और कोई दूसरा तो करते नहीं. देयर इज नो अदर दिस. Is that clear? I mean, the scope of this entire program, single board computer, I started with just a importance, but ended with what is final goal of software development in a single board computer. यहाँ तक अपना skills जो है, जो भी हम करते हैं, compilers, controllers choose करते हैं, should do it ourselves on our own without buying any ready-made platforms. अब रेडीमेड प्लेटफॉर्म किया तो आपको क्या होता है कि हर चीज करके आपको रिजल्ट दिखेगा, वो तो आपको 2-3 में ही मालूम पड़ेगा. बट आई एम सेइंग डू इट योरसेल्फ. आप खुद करके देखो, ये नहीं होता है, इतना सिंपल नहीं है, इतना आसान नहीं है. जो दिखता है वो सच नहीं है. देन डू इट योरसेल्फ. हर चीज करो फिर, क्योंकि ये कोई फिल्म नहीं है ना कि 3 घंटे में पूरा जिंदगी का ऐसा दिखाने. ये तो लाइफ है. एवरीथिंग यू शुड डू इट एंड यू आर ए स्टूडेंट. आज हम किया तो आप 50 साल आपका प्रोफेशन में यू विल हैव ए सक्सेसफुल करियर. अगर अभी हमें वो हैबिट नहीं है, आदत नहीं है, तो आगे चल के बहुत भारी पड़ने हो. फिर हम विल एंड अप विथ व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स, नॉट डेवलपर, नो, not a designer. We will end up with benches. कुछ तो IT में कुछ terms है, something. Admin jobs. जैसे जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट डाउनलोड करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट का कोड तो आता ही है हमारे कंप्यूटर में. जब वो कोड हमारे कंप्यूटर में हम लोग उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हमारे जो डिवाइस में. They don't give you, for example, when you write a C program, there is something called .c and there is something called .exe. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट आपको खाली .exe दे रहा है, .c नहीं दे रहा है. ओके, लेकिन लिनक्स .c भी देता है, .exe भी देता है. While installing you will notice this difference. ठीक है, विंडोज इंस्टॉल करते वक्त .c फाइल एक भी नहीं दिखेगा आपको. वही आप लिनक्स इंस्टॉल करो, हर फाइल आपको दिखता है कि मैं क्या क्या लोड कर रहा हूँ इस कंप्यूटर पे. मीन्स what does it mean? Linux while installing it compiles, but Windows while installing it's not compiling, it is executing. कंपाइल अपने ऑफिस में करके रखते हैं. आपको दिया है, हाँ, आपको खाली exe फाइल दिया, बस रन होगा वो, बट नो C फाइल. मशीन आपको बाइनरी दिया, उसने जीरोस और वंस दिया, बस. मतलब एंड प्रोडक्ट दिया, नॉट द सोर्स. ओके, should we stop now? Let me, okay, you complete the logistics, that how many people are coming tomorrow, and I will take couple of questions online. Yeah, you can join online. Nitin, most welcome. So we'll have a hands-on session tomorrow.
Those who are interested in doing physically, they can come tomorrow. Or if you want me to courier something, then keep in touch with us. We will send the material by courier. Let's say by 10 o'clock. Any other questions? Otherwise, we will discuss in WhatsApp also. Have you enjoyed online session? All of you? Great. I will share the recording also. Those who have missed, no, you can listen. Yeah, tomorrow there will be a lab session. I will broadcast also tomorrow lab session what we are doing. But I personally suggest you try to have this hardware. Yeah, I will share you complete video. I will show you. It is recorded. Okay, so share your comments on the WhatsApp group so that no, if there is anything which I need to change or improve, I will do that. No, you don't need to bring anything. We will give you whatever is the components, everything, soldering gun, testing, measuring, everything we will give. Now, online means only demo I will do. But if you know, while demoing, if you want to practice, then you let me know. We will arrange that components and all, the PCB, the microcontrollers, everything. So maybe some other lab session you can practice it. No, tomorrow, let's see. I mean, we will take a half day session, at least minimum till lunch break. We will have. Yeah, if possible. Yeah. Either no, you can pay through your phone pay or whatever. Personally, WhatsApp me. If you are paying, then so that I will record it. No, your payment details.